तेरी दीवानी दीवानी इश्क जरूर जब हद से बढ़ जाए हंसते आशिक बन जाए इश्क का जादू जड़ जड़ So guys, we'll actually start in just 3 minutes. I was just waiting for things to get ready and all of those things. You can use the AMA chat to. वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। सभी का स्वागत है एएमए सेशन के स्ट्रे शॉट के एएमए सेशन में। आज हम पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर, वो भी अंग्रेजी में। हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चंस कहाँ गए जो मुझे पूछने थे? ला 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 ला। Ignis बोलो तो श्याम भाई, वेलकम गाइस, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। टुडेज वी आर गोना बी So अरेंज I'm just waiting for it to get ready. हो भाई, वेलकम गाइस, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वो गाइस कुछ सेटिंग्स है वो जो मुझे चेंज करनी है। We are just waiting for Dom to join. So just give us गाइस few more आज minutes and we'll join and we'll start. ओके ओके, वी विल वेट, And वी विल as I वेट। mentioned, if any OG members or any Gen Zero members have questions, at the end of this session, we will actually take every questions from the community members itself, and we'll be answering that as well. ओके श्योर। गाइस वेलकम, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। कितनी बार वेलकम। कुछ So if you औसम guys have questions, just let ओसामा me know. चौधरी, मेरे बस में नहीं है ये सब We'll ask the चीज़ें। questions with Dominic itself, so we'll be इंग्लिश answering में those. मजा आने वाला है गाइस। And वेलकम I गाइस, थोड़ा hope सा फन सेशन am है, I थोड़ा सा audible टॉक to सेशन है everyone? स्ट्रे शॉट वालों के साथ कि उनका गेम्स के लेकर क्या प्लानिंग है, क्या बातचीत है। तो बस उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, सो वेट, वॉच एंड लिसन। क्या बात चलती है हमारे बीच में। हम वेट कर रहे हैं डॉम का, जो कि सीनियर डेवलपर है इस गेम का। वो आएगा, हमसे क्वेश्चन लेगा, ब्रीफ करेगा और आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करेगा इस गेम की। आर्च इज लाइव, वी विल प्ले आरपी आफ्टर दिस सेशन, डोंट वरी। भाई बहुत ग्लिच और बग है गेम में तो ओसामा भाई, दिस इज गेम इज नाउ इन डेवलपिंग मोड, सो यू विल फेसिंग दिस इश्यूज, बट डोंट वरी, इन फ्यूचर टाइम दे ऑल फिक्स You can दिस hear. एंड लॉन्च इज प्रॉपरली। Yes, yes, yes. Or bro, guys only use English language in chat. I'm so sorry for today's only. नहीं तो भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंदी। But today is in our client is out of the India, so we only communicate in English. Okay, for today's only. After this session, we can mark our जो भी करना हो कर लेना हो, ठीक है? Only English, because we are watched by foreign audience and intellectual peoples, all of them.
Hey guys, so I think let's start. Hey Wolf, hey Big Talker, everyone who joined this session. So we are doing this session mainly to address few questions which we have from the community and a lot of commonly asked questions. So let's get started. So first of all, I'm your community manager, Kartik's here. So I invite you to this AMA session along with our CEO Dominic. And we also added few game streamers all the way from India who will actually ask few questions as well. I hope you all enjoy the session and stay tuned as we will be taking questions from the audience at the end. So every OG and every Gen Zero members will be able to ask questions and will actually take the questions from the chat itself. So I'm inviting Crypto Gamer, Dominic Mayoff, our CEO, and some of the streamers and some of the every community members to this chat. Hey guys, welcome. I'm Dominic here. Nice that you guys join us. I hope everyone can hear me all right. Kartix, please let me know if I cannot be heard. If you guys hear me, no need to say anything. First of all, thanks for joining. It's nice to talk to you. Last AMA session has been quite a while. As usual, we're working day and nights. I know there's many people are actually following us on our socials. They sometimes see at what hours we put in as a team. There's been just recently this week, we had a couple of nights where we did all-nighters, right, to make our big announcements, have a reveal trailer ready. We're working hard on that, and that's why we actually didn't have the time to do an AMA, but we're going to do more regular AMAs from now on. So stay tuned for the future. Regarding the announcement yesterday, I think that's the best to start there. I'm personally ultra excited. Not many people know this, but I actually played professional basketball when I was young. This is ages ago, obviously. Oh, Jesus, I'm already 41. I feel very old now. But when I was like 15, 16, I was playing on a very high level. And then I moved actually to the US and played in the USA in a prep school, one of the best schools for basketball in the USA. And had plenty of Division I scholarship offers. So this announcement from yesterday that NBA superstars LaMelo Ball, Lonzo Ball, LiAngelo and LaVar and Tina, that these guys join us is for me something ultra exciting. Not just from the gaming side in general, right? Like I follow basketball up until today. This is literally something that I do in my very little free time that I have. I look at the NBA and see, okay, what's going on there, and I was also happy to see actually that LaMelo had a great game this morning. That I saw a couple of stats. Preseason in the NBA just started, so very exciting for us, right, to have these kind of celebrities. And I mean, LaMelo is a superstar, and I mean, the guy signed a $260 million contract. I think that tells you everything you need to know. And that these guys are supporting us is just amazing. Right? So I have my deepest respect for LaVar as a dad to bring up 3 superstar athletes. I've never heard anyone do that, and Tina, like, as their parents. So personally, something ultra exciting. But let's jump in. Let's open up the first questions. So please, our streamers that I invited, that had some specific questions, or any community member, OGs, Gen Zeros, or general community members, feel free to ask me any questions, and then we can go through it. पहला क्वेश्चन लेजेंड का था. लेजेंड भाई. So the streamers, so you guys can actually ask questions right now. I have enabled permission for you. So Hello. Can Legend you hear के- me, guys? Hey, yes, nice to hear I you. have a question to you, sir. What inspired the concept and the story behind StrayShot? Well, concept is a longer story. I mean, we're a small gaming studio, right? So when we initially decided to build this game,
we were first focused on, okay, what is doable for the size that we have. Also recognizing that we were bootstrapped, meaning we were like completely self-funded by iBloxx, by ourselves at the beginning before we did a funding round. So we looked at, okay, what is realistically doable for us? For example, we knew from the beginning we could not build an RPG, right? Like that would be way too heavy from the development side. And there were also other aspects which we can talk about it later from a game economy perspective, where we felt like this is the right way to go. I would say competition was certainly one of the driving forces behind the esports genre, and having like a competitive game was something that made a lot of sense for us from that aspect on, and so this is what we had decided on. Story-wise, the story of StrayShot, there's not too much info that we have shared yet, but rest assured this will come now. So you actually start as a bounty hunter in an island in South America, where you have to fulfill certain quests. So we will always have a storytelling included in whatever you do. We are planning on introducing many different seasons with many different quests, but it's all balanced around, or it's all circling around competitive shooter game mechanics, however, on different levels. And we can go into more details later on. Any other question? Yeah, I have one. Can you share some instincts into the game development and your journey and what's your major milestone till your development journey till Yeah, now? absolutely. I would love to. Yes. So we are approaching about almost 2 years in development. We started literally just after Christmas that week, so in the new year. So we're close to 2 years in development. And what we maybe from a feature perspective, I can give you a couple of small features that we're looking to introduce in the very near future. So we already actually implemented the voice chat. It's just not yet tested well enough. So because certain things can have impact performance on the server, and we obviously have to manage that. But we're currently testing a few things. It's not going to be in today's beta session, but hopefully it will be in the next or latest in the one thereafter. We also already have vehicles in the game, but there as well, we want to clean up a couple of cosmetical aspects that when you get a vehicle for the Battle Royale match, that when you shoot that vehicle, that it explodes very nicely. So we're adding a couple of VFX effects into it currently. So you can expect to see that in the near future. And certain destructible buildings. With the destructible buildings, we have to balance out, okay, what is good for the performance of the game versus what is really fun, right? So the destructible buildings that we will introduce is mainly those areas where people maybe want to camp, want to snipe, like a hideout or a lighthouse or something like that, where you have a good overview for sniping. But it comes at a significant risk, because if someone has like a rocket launcher, an RPG, or grenades, then he can blow up that whole part, and you obviously die in there. So it's a risk reward, right? So those are the specific features that are very close to being introduced already. However, on a larger scale, I would say on a big picture level, the next big introductions that we are actually planning is first a tutorial map. Where people have a storytelling, where they learn about the game, you learn the game mechanics, you learn how to heal yourself first, and it's all guided. It's like in an amazing environment. You will love it. You see a bit of the environment already in the team deathmatch map, but more even on the user interface. The new user interface we introduced 2 weeks ago in the previous beta testing. So you will see what's coming there a little bit, but the environment is absolutely stunning that we're working on. I really love that. So this tutorial map is going to be for us a game changer, because you can literally download then the game and you can instantly play. You don't have to wait until we do the beta sessions with anyone. You can play it whenever you want. And we're going to do a player versus environment map there as well, so people can train, people can play on their own whenever they want. You just play against AI. This is mainly for training purposes and for fun.
So these are the next big milestones that we're all looking to achieve. Definitely this year altogether, right? So I mean, this year is basically 2 more months, you can say. So in those 2 months, expect a lot of updates. Yes. Thank you. Now let me ask. I want to ask one question. First of all, hello, crypto gamer. Hi, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. I want to ask, what challenges did you face during the development process, and how did you overcome with that? Oh wow. Yeah. Good question. Good question. So I would say the biggest challenge for us was Guys, balancing this is a performance of the chat session game. चल रहा You है गेम know that it doesn't lag, StrayShot that के you have डेवलपर्स good के साथ. server performance, you have डालो. good pings. Although of course ping depends on the Only intelligent location people where watch you're this. connecting from. And right now everybody's playing on the same server. This obviously will not stay like this. But I would say भोलू का that नंबर was भी आएगा. the biggest challenge, managing performance versus managing the look and feel, right? The look and feel, what I mean by that is not necessarily the environment, because that should never have an गाइस impact ये on बता रहा है performance, गेम्स के at फीचर least बता not रहा on है the आने server वाले टाइम में performance, किस तरह only के on your रॉकेट local लॉन्चर्स होने machine. वाले हैं, गन्स होने But वाली है, आरपीजीज के फॉर्मेशन the होने look and वाला है, feel of animations, व्हीकल्स भी आने because वाला है. the most समझे? consuming गेम्स अभी जो है इंडिया में performance लॉन्च that नहीं you'll हुआ ever है, बाहर have लॉन्च हो in a चुका है multiplayer जर्मनी shooter game एंड दुबई is के इधर. literally the इंडिया animations. के लिए प्रिपरेशन And कर रहा है, तो we उसी के have लिए a lot more good ये समझा रहा animations है कि आने वाले in the टाइम में game क्योंकि इंडिया के हिसाब already, से अलग which we're इसको currently सर्वर testing, प्लान and करना पड़ रहा that's है, always the biggest इसलिए challenge, भी to इतना टाइम लग रहा optimize है इनको. certain ओके animations that server performance doesn't drop अमिल when जी, you have यू हैव 50, वन ओनली 60, क्वेश्चन. ना 70 or अभी कुछ 100 पूछना होगा players. तो और पूछ लूंगा मैं. Okay. अवेल इजी का नंबर. Any other questions? Also from community, right? I mean, anyone can ask. Hello, Crypto Gamer. Hey, hi. I have basically one question. Could you discuss the game approach to anti-cheat and fair play? Yeah, absolutely. I mean, this is a huge aspect, right? For us, a much larger aspect than, I would say, normal shooter games, which are notoriously known for cheaters and hackers, right? But because our game has in-game currency, which translates to real US dollars, so you as a gamer, if you play well and you earn this in-game currency, you can decide to use it to buy skins and characters and upgrades and all of these things. But you can also just decide to cash it out, right? And so anti-cheat is absolutely crucial for us, to have really good anti-cheats. So we're going to take a completely different approach, because in traditional gaming shooter games, cheating is somewhat tolerated from the studios. Because it's a pain in the ass for everyone, for every studio, right? It needs constant monitoring, it needs constant updates. It's very expensive to work with certain anti-cheats, because that's always priced on a CCU basis, on concurrent user basis, or at least that's the most common pricing models. So many big studios don't really focus too much on it. Versus with us, since you can actually earn in-game currency that translates to real life, that you can spend outside, to go shopping, or if you play really well, go on a holiday or whatever, right? We have to make it a focus. So cheaters in our game will be penalized very harshly. So they would literally be banned for life. If we can, obviously, right? We are securing certain information about the players, obviously, like the MAC address of the machine and certain things. But in addition to that, obviously, we need good anti-cheats, right? So we have currently 2 anti-cheats implemented, which are in test mode. We're going to add 2 more. So we'll have 4 anti-cheats once we go live with the full game, to make sure that we are as secured as possible. In addition to that, we're implementing certain other features which help us for monitoring. So what you will see later on today, hopefully you can join us. If you play the Battle Royale mode, there's a spectator system inside. So you can spectate the guy who killed you. And we're also working on a kill cam feature. And certain things are always going to be recorded from our side, right? So we're working on a lot of things. For the bigger events, and that has more to do with the mode of the gameplay mode that we will introduce, which is currently very confidential because it's awesome. I love it. In this mode itself, we have live referees as well, right? Like, so we intend to hire quite a few people to purely, do customer support and do, I would say, refereeing, right? Like a referee that makes sure, okay,
things are going as planned. Of course, we'll always rely on tech. So these 4 anti-cheats that we're using, or 2 of them already implemented. One is an AI anti-cheat, and the others are typical anti-cheats, I would say. We're not going to say which ones it is, because that would defeat a bit of the purpose of anti-cheats. It's possible to find out, of course. You know, if you try to hack the game, there might be information for you to find out which anti-cheats we're using. But we भाई have लास्ट rest में assured मीटिंग that तो we are हिंदी में taking it समझा very, देना very प्लीज. ओके seriously. I would गाइस, मैं आपको say हिंदी में more समझा. serious than anyone else डोंट in वरी. the shooter game genre. Yeah. I have a one last and final question. Uh, what are your thoughts on the competitive gaming scene in India and its growth potential? मेरा क्वेश्चन ठीक कर मार दूंगा. Wow, I mean, India is huge, right? मेरा Like क्वेश्चन Yep. पूछ when लिया when you इसने. see BGMI is just again reintroduced. It's a huge revenue driver. There's lots of people Yes. playing it again. Same for Free Fire, right? I mean, Yes. India is fast. I would say one of the biggest markets, right? So clearly we are hoping to make a strong push in India together with you guys, hopefully, right? That we are hoping that you will like what we're doing and you join us for years to come, hopefully. Yes. Yes. And also, so we have few questions from our community members itself. So Mallu, he actually asked 2 questions. One, what languages will the game will be available? And the second question, any information about the logged game modes? I only understood the first question, which languages are available. I mean, right now, obviously English, right? That's where we start. And then we intend to localize. And we intend to localize on the markets that we're focusing on. So I would say one language that we want to expand on is certainly Spanish as well. But of course, certain Indian languages are planned. But it depends a bit on the market segment. So at the beginning, we'll go out globally, right? And everybody can play the game. And we're going to see, okay, where is our game the most accepted? Where is the biggest retention? And then, of course, we're going to focus on localizing a lot of different languages. Can you please repeat the second question, because you broke up, Mohammed? The second question was mainly regarding. Yeah. हिंदी Am I में audible? बोलो. हिंदी में नहीं बोल सकता रोहित भाई. वो बाहर का You can बंदा hear है. me Again? बाहर का properly, बंदा right? है. बाहर का Yeah. बंदा है. So the तो भाई second question was regarding. भाई प्लीज आस्क वेयर आर द डेटा सर्वर Will इन there इंडिया. be a mobile तो तुम्हें भी version? कुछ क्वेश्चन पूछो तो पूछ लो. So मैं that's the most पूछ लूंगा. commonly asked question which I'm डेटा getting सर्वर तो every वही time मुंबई में है. from the बात community itself. What would you give benefits Yes, to yes, Indian yes. gamer So yeah, I aspect? have good news on this one. There will 100% be an Android version and probably an iTunes version as well for iPhones, right? However, I cannot tell you the date yet, but rest assured we're already working on it, right? So in my opinion, we're already advanced, but we're still a small team. So the focus is first PC version, right? And then mobile. Those are the expansion plans. First, we are going to launch on PC. And right after the full game launch, we are looking forward to the mobile phone launch. It's not going to be later than end of Q2 next year, right? So I think we'll be quite a bit before that. But that's as much as I can tell you. So it's definitely going to come not too long anymore, because I mean we're already approaching end of the year. It depends a bit on the hiring as well, because we constantly look for good game developers, and hey, maybe we get a couple of good applicants and then we can even speed it up further. But I would say Q2 next year is something that is very realistic, and let's see if we can even push those boundaries and be there before. Any other questions, Kartix? Oh, Yeah, I have one question. Hello, Mr. Crypto Gamer. Sure. How are you doing? Very good. How are you? I'm good. I'm good. मैं कौन सा So I पूछूं? want to ask you, could you tell us about Any the cloud gaming gaming feature and gameplay वेबसाइट mechanics वर्जन. that अच्छा sets ये क्वेश्चन StrayShot नाइस. ये apart पूछता हूँ. from the other games? एंटी चीट कैसा है जी? एंटी चीट तो बता दिया ना. I mean, तुमने पूछा था. unique gameplay, and thanks for the question. Unique gameplay, I would say it starts overall
at this feature of that in-game currency translates to real world, right? Like cryptocurrency in the game. And we focus a lot on sustainability of the economy. So from that aspect, when if you have followed the crypto markets in the past years with the first wave of crypto games coming out and really exploding in 2021, I would say most people know Axie Infinity, for example. There wasn't really very good economic models behind that, right? What happened was there was just way too much in-game currency paid out, and that's not sustainable in certain aspects. And we focus fully on doing something that is 100% sustainable and long term, right? So that's one of the things. I would say, I mean, we're a shooter game, and you see, if you say, okay, is it the storytelling of a shooter game? And you can say, okay, Tom Clancy's or Far Cry or these kind of games are going in that direction. Game mode mechanics, we're probably close to Fortnite and PUBG. However, if I have to drill it down, what makes us different from others is the connection to you guys, actually. So we're going to introduce a lot of things that are for the community where you guys will have a real say-so, right? So we are thinking about doing like an inner circle with community members where we have community क्या चल council रहा है निंजा भैया representatives. मेहुल भाई If you रहने दो haven't heard of that yet, मेहुल you will get an लोड मत लो announcement ज्यादा very, very soon that we're gonna आराम से खाना पीना खा select लो a lot of community council थोड़ी देर बाद आ members जाना to work with us directly to represent the voice of the community. And after we have a certain baseline of the game fully finished, you will see a massive shift there, right? So we're gonna go in this direction where we're literally gonna talk to you guys and say, hey, which feature should we work on next? What do you want to see in the वाला game? बैटल And that's भी gonna आएगा be आएगा आएगा yeah, that's gonna be something बताया ना that अभी will इसने be अपकमिंग making में a big difference. Thank you. So let me do one thing. Let me actually add weekly access to the community members so they can actually ask questions. will this game release So मोबाइल बोला है ना Absolutely. 100% मोबाइल वर्जन so I'm एंड्रॉइड adding वर्जन बोला है voice access. So 100% first लॉन्च of होगा all, कब I'll होगा add ये पता नहीं पर to होगा प्लानिंग में okay. So every Gen Zero members at the moment, every Gen Zero members, you guys can actually ask questions. I have added access to you. So if you guys have any questions, please feel free to ask. Like Wolf has asked a few questions. There are some questions from Shark. There are some other questions from Popco. So if you guys can ask, can you guys please confirm like if you guys can actually talk? हो गया अपना क्वेश्चन हो गया Hello. Okay, let me just. Can you guys talk right now? I added access to you. Yeah, so you guys have access right now. रुको अभी निंजा भाई इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे Please check. Wolf, can you hear me properly? I think they're still muted. So रिपोर्टिंग डाटा कैसा होगा गेम का अच्छा होगा जी अच्छा ही होगा मत बोलो यार मत पूछो तुम मैं पूछ रहा हूँ ना Yeah, they're unmuted गोलू ने right भी now. इंग्लिश में बोला तेरे को कब बोले मैं पूछ लिया साहिल भाई दूसरा क्वेश्चन मैंने ही पूछा है They're unmuted. Can they please check? Yes. Hey Dom, Tugs here. Can I go next? yes, absolutely. Please, nice to Yeah, hear Dom, you. this is Tugs here. Yeah. So regarding my question, I'm from Indian region, and we do a Mhm. lot of esports events locally. So regarding StrayShot, what do you think will be the esports map regarding the Indian region? You mean on a local aspect that we Yeah, are like doing basically local Indian events? region or global events, whatever you're planning regarding esports. If Yeah. you could. So our plan is literally to bring esports to your home. That we do a professional esports environment where everybody can play from home. However, we are super open to organizing local esports events, right? So if this is something that you would propose, you want us to do, we're super open to that, right? So we're definitely gonna do some events here in Dubai. That's 100% sure because it's easy for us because 95% of the team is here.
But we're also super open to organizing events in India, in the US, in the Philippines, wherever, right? Like that's something that we would love to do. Okay, Dom. Thank you. Thank you for the answer. Welcome. Thank you for the question. So I have added access to Gen Zero members. OGs will get access right after the Gen Zeros finish with the questions. So we have like a proper schedule. रशियन है कि So गेम में Wolf, पूछता हूँ I think you asked निजा few भाई तुम questions. कुछ पूछो हाँ साले Please ask the questions so that they आज can फास्टली properly answer to all of the pending questions, I believe. All right, yeah, I'm good now. So I wanted to ask what steps will be taken in order to ensure that what happened, I want to say about a week ago now, doesn't happen again when in regards to the communication of between staff and the community of there being a session going on, and even though maybe even if it's private, it was known that there were some content creators streaming at the time, which would have probably been a great idea to at least let the community know so that way people can watch, because I know, and maybe you guys क्वेश्चन ही know, लोड ले that लिया मेरे को people at least want to just be able to see यार gameplay, क्वेश्चन तो लोड ले रहा था कम and से कम because a lot of people want निजा to see भैया what the अब gameplay कुछ और actually is कर before लो even bothering आज putting it to के लिए install. बहुत अंग्रेजी आ रहे गाइस अभिषेक भाई जब तक सेशन चलेगा बैठना पड़ेगा ना Very good question on that end, and apologies कोई बात नहीं again आज जल्दी आया हूँ for वैसे ही that. सुनो यार I mentioned it a bit at the beginning of the call. Yes. The immense amount of hours that we put in, and at the end it was my mistake because I communicated it, but I didn't follow up on it, and we are just super underwater, super busy with delivering everything. Everything is tight, from a deadline perspective. But that doesn't excuse the fact that this was literally a mess up. I cannot say it any other way. And what we did afterwards was we had a lengthy discussion and recognized the mistakes that were made. And we hired actually community managers. I see Dawn here in the call already. We'll have a couple of more community managers. And in addition to that, it's this community council. So what I envision for our game is that we are going to do at least weekly update sessions with the community council representatives, and those will be the spokespersons for the whole आज ये सारी अंग्रेजी community. सीख के जाऊंगा And we're hoping that the community council reps will grow and grow. Yes. But in addition, we obviously hired more moderators, to make sure that the communication between development, or let's put it like this, management, development, artists, and moderators is more clear, right? But apologies again, that was clearly a mess up on our side. Okay, understandable. Another question I had was questions about the affiliate program. It's been known that some streamers, like as before, had gotten the ability to have a session like this, and some streamers have come to me asking when is it going to be their time to shine. So you have these are even some members that have been very active in the community, and they're just wondering if they're being left out, or how do they get their slice of the pie, and just kind of get in. सब चीज मांग रहे हैं Okay, yeah, understandable as well. सब मेरे ऊपर तो जा So रहा है same with the affiliate system, and that was, wow, that was, I mean, Cartex knows how upset I was with certain affiliate system providers. So we, after screening for months, what is the right affiliate system to work with from a tech perspective, Any right? Indian Because developer we this want to game हाँ वो provide देव our community देव the इंडिया से option ही that है you can share पर content, उसको you भी can हिंदी do नहीं a आती यार stream, वो भी उधर का and है if somebody signs up through that साउथ का stream and this person buys something, buys a skin or a battle pass or whatever it is, निंजा that a भैया समझो certain इतनी इंग्लिश revenue समझ आती तो share will be स्क्रीन में देखते allocated ना वही तो to यार that referrer. स्कूल भी नहीं In लगता addition पढ़ाने to that, what makes it even more exciting is if, let's say there's a couple of people signing up through your referral link, and one of these guys qualifies for a tournament and wins the tournament maybe, and gets a lot of in-game currency, then there's on top of that is something that we're paying out in addition for the referral as well. So it's going to be really, really good for content creators, and for anyone who wants to support our game and invite other people. However, what happened was this affiliate system from the US, they completely screwed us over. So we spent literally, I personally spent at least 100 hours of my time going through the requirements. There's literally software development
and project management stuff. And it was an immense amount of time that I spent on it, and even more, of course, what the team spent on it, right? So what happened then at the end was, oh yeah, okay, now we can do that. Oh, by the way, the price that we agreed on, oh no, you need to pay, I don't know, a ridiculous amount, like a ridiculous six-figure amount on top of that, because it's actually more complicated than we had thought, right? So this didn't sit well with me. You can be sure, because we spend so much ये क्या time हो रहा answering है? all ये their मजा हो रहा है जी? questions and all of this effort that we put in. So it's currently honestly with legal, ये so क्या हो रहा they will है? handle that. बहन तो सवन And then we'll शुभम see. But रहने however, दीजिए. we actually started building our own, आप भी because रहने what we are दीजिए शुभम doing भाई. is complex. I आराम से. understand that. जाइए कुछ काम कर लीजिए. Because we have different events, right? There's, it's different when somebody buys a skin मीटिंग चल रही है community on the meeting. in-game marketplace versus he gets a reward from a tournament, right? Those need to be tracked differently. So what we're doing is quite complex. However, we made a lot of progress. So we have the baseline almost finished, I would say. I think safe to say we will be able to introduce this in November, during November sometime, and then people that are interested can get in touch with us, and then can sign up. It's obviously free for anyone, and they can start then streaming sessions and all of this. This is also a little bit why we didn't push too much yet on the content creator side. But please rest assured, any content creator that is amongst you in the community or wherever, please approach us, right? Like, this is exactly what we're hoping for, that we can work with you guys together and share the cool stories about StrayShot. Is there anything else, any other questions you want to ask, Wolfless? If no, then we'll actually move forward to the OG section as well. So we'll take questions from the OG members as well. Yeah. Just I'll have a few more points and maybe smaller questions, but I just Sure. want to say that that was a great answer, because that made the affiliate program a lot more clear. Because I know a lot of people are under the impression that it was simply like a role that you would get to be like, hey, look it, now we are gonna support you, and because you're gonna support us, and you're gonna get more attention. But but thanks for the explanation. That was a lot clear. Yeah, no. I mean, it's not that we're gonna build something really, really good, right? So the streamers and the content creators and anyone from our community who wishes to support us, they will get access to an internal dashboard where they can see how many people signed up, how many matches did my guys who signed up played. Did this guy win something? How much, rewards did I earn for this? And these rewards you can then use to buy skins or season passes, or just cash out, whatever you prefer. Right? It's literally the same currency that you can exchange for US dollars or whatever currency you're looking for. So it's gonna be something really good, right? It's not just you get a role and please share something. We don't want to go that way. So we feel like what we have here together with you guys is too good to just take it too easy on that. That's why we spend so much time on this affiliate system with these, morons, and excuse my expression, but I just can't. I mean, Cartex knows how upset I was, like, immensely, and they're a huge company. They're like a $50 billion company, and I had a deja vu to my time when I was vice president in Credit Suisse, and I managed a lot of people there. And part of my job was also to lead software development teams there, and it's just so corporate. It's like, it's this corporate politics inside a software development company. And then suddenly, here, a huge price tag that was never indicated. Like, literally, we were like, okay, next week this thing goes live, and then we're like, no, wait, here's a huge bill, and that didn't sit well with me. So this is literally currently with legal. Not that it makes a difference, because I have written it off, but this didn't sit well with me, and we're currently building it as we speak, and we made some good steps forward. If you guys want, I can share an update, maybe not next week, but the week after, where we stand, and we could probably start onboarding the first few content creators then quite soon thereafter. But certainly in November, we can start the onboarding for content creators, and this comes, obviously, community always comes first, right? Like, that's very clear. So even if OG members, Gen Z members
maybe they don't have the huge following that certain other content creators have, because we get inquiries from very big ones, and I'm super grateful for everyone who joins us. But the community members that are here from day one, you will not be left behind, right? So rest assured that anyone from the community who we know is supportive and helps us. It doesn't matter how large your following is, we'll always accommodate you as well. But I'm super excited that we have streamers here today, and that they want to support us in building the Indian market especially, and it's really awesome. Right. I just have one final question before we pass it off to the OGs, because I know they're having some questions. What steps are going to be taken? Because I asked this earlier, but I don't think it was really answered, which is a response. But what steps are going to be मेरे को taken हिंदी in order में बारे में to देना अच्छा ensure that things भाई बोल are रहा है कि अगर communicated कोई है clearly? जो कंटेंट क्रिएट That करता है way, the उनको situation last बोला week doesn't हमें happen again, कंटेंट and कंटेंट करे और just रजिस्टर कराए overall, अच्छा the ऐसा बोला community, get इसने the community included, even if it's like small निंजा मुझे announcements भी of if you're देखो flying मुझे out somewhere निंजा and there भाई might को be देखो something निंजा भाई streamed, को देखो just to have the मतलब community at least watch and something, बोला because तुम there's a lot हमें of dry सपोर्ट करो हम spells तुम्हें of what's सपोर्ट going on करेंगे and engagement ऐसा नहीं बोला इसने drops तुम हमें सपोर्ट करो हम significantly. तुम्हें पैसा देंगे ऐसा नहीं And if बोला it's इसने not a session, it just drops. So just updates like that. It doesn't have to be a pain to bother everyone. ऐसा बोलना Just at चाहिए least था if it's dropped in chat, because even on the Yeah. official website for StrayShot, the news section is gone, so it's a lot harder to find anything. Yeah. I think it was answered with what we did to prevent it was we hired more community moderators, and we're working on the communication between myself, the developers, ऐसी बात artists, नहीं है and विवेक the भाई community moderators. Because I mean, Yeah, Kartix is the only guy who's sitting Yeah, here yeah, in the yeah, yeah. office, right? So he has a huge workload, and Is- we have to support him obviously more. So there's more Why you people look supporting like him, क्या हो and रहा है ये? that's that the communication is more frequent with you. But the biggest difference will be the एक क्वेश्चन community पूछूंगा council, देख right? एक Because क्वेश्चन जरूर पूछूंगा I अगर just, I मौका mean, मिला तो अभी you guys might know it who know me a little bit better, but I literally have 100+ hour work weeks right now, right? And I forget stuff then, because I try to do everything as good as possible. And if we have a community council in place where we just have weekly catch-ups, hey, then there everything will be communicated, right? And then we rely on those community council representatives to share that information with everybody, in addition to the public channels, even if it's just a follow-up, right? Where we say, hey, guys, you ping us and say, Dom, the story has not been updated yet. You should actually communicate that you're flying to Gamescom Germany, or you're flying to the GDC in San Germany Francisco देगा like last March, and things like that, right? Because yeah, it's hectic, I have to say. So my hopes are that the community council will take care of all of this communication. But in addition to that, we have Don here who supports us, and we'll have more staff to work on that, right? So I think this will not happen anymore, and will be significantly improved. Okay, awesome. All right, thank you. Just pass it on to the OGs now. Okay, so I have unmuted OGs. Guys, please feel free to ask questions if you have. All right. So my only thing is, because I am a content creator, decently, respectively, okay at it, but we've been asking about a Discord channel to sit there and go ahead and for certain content creators to go ahead and put their stuff out there. Not only will it help get the content out there, but when someone new comes in or people are asking for content of the game, we will have the VODs up and everything like that. We can't put our information out there anywhere on the Discord. When can we kind of expect for नंबर आने दो भाई नंबर आने a दो Discord विवेक channel भाई for पूछूंगा streamers and content creators alike to go ahead बहुत and important क्वेश्चन see पूछूंगा that इनसे so we देखो can start helping the newer players and newer people in the group out? Okay. Good point. I wasn't aware that you guys specifically asked for a dedicated channel for content creation, but I have absolutely nothing against that. I would love that. Right. So what I will do is we'll pick this up next week on Monday. We'll talk to Don and Artex internally, and then we'll just set it up.
I don't think this should be a too lengthy process. So how about we catch up next week and see how this is handled? We just need to think about okay, the monitoring of certain channels and all of that. So as long as that's taken care of, I don't see anything speaking against that. So to me, this sounds fantastic. Well, thank you for that. I mean, we have been asking for a while, and क्या चल रहा I है? mean, me and Round to heaven. Wolfles, I mean, like Wolfles रहने posted दो. in here. कुछ और काम We've कर been लो talking तुम. about it for a काम while. आया We've ना. also like had ideas. We know how to control it if you guys need अपने help फालतू with it, दिमाग को as लोड I've मत दो. been part of multiple discords that have hundreds of thousands of people that stream and everything. So नेक्स्ट I'm वीक pretty sure में we would कैचअप both करेंगे be और happy to देखेंगे help कोई चैनल्स के if you मॉनिटरिंग guys करेंगे. do need ओ that, and कुछ समझ आ रहा है निंजा? सब आ just रहा है. let मेरे us को सब know समझ and में आ रहा है. we'll happily Okay. lead you in the right ओके way. बोला अभी इसने. Awesome. No, sounds fantastic. So ये साउंड बहुत अच्छा कर रहा है. you will hear Fantastic. definitely from us next week. Okay, so तुम I'll यहाँ have an आने वाले हो internal team next week. talk on first thing Monday morning. मंडे मॉर्निंग को फर्स्ट And थिंग यही then करेंगे. we can have फिर a discussion फिर Tuesday, हम डिस्कस Wednesday, or करेंगे क्या whatever. इवेंट होने वाला है. But let's get it done. Let's set it पर up. अभी I लेट्स don't see ये सब any होने दो. reason why we shouldn't. पर अभी क्यों All नहीं? right. Well, thank you. I appreciate that, bub. थैंक यू. मैं Oh, प्रशंसा I करता हूँ. appreciate it. Thank you very ओह much. नो आई अप्रिशिएट. मैं भी थैंक यू. Hi Dominic. Uh, Hi Cortex. Am I audible? Yes, you yes, are. brother. Hey. You are. Okay. I have only one question, which is how you people earn money, because so many people are skeptical still because of the Web3 platform. So it's a free to, from my understanding, it's a free to play game, and you guys make money from in-app purchase and royalty. Is that correct? That is correct. Yes. So it's a free to play ये game. पक्का बनिया है However, you कोई. can still buy battle passes or a season pass. You can buy certain skins if you want. And there's also like a microtransaction सीधा आके पैसों की packs बात in there. करिए. And this is how we finance the whole operations. In addition to that, you might be aware of it. So I personally invested quite a lot of money in the company and in the game. And I raised some money with the team together to basically finance all of these operations. So we actually have a good run rate for like 2 years almost currently. And we're looking to obviously then have consistent revenue from microtransactions and the like, cosmetic transactions. Okay, thank you for the reply. That's the only one. Welcome. Okay. Welcome. So, is anyone have any questions which they want to ask? Please feel free to ask. We have about 10 more minutes because beta will start at 7, so we'll close the AMA at in 5 to 10 minutes. So we have a couple of more पूछना ही पड़ेगा questions मुझे we लग रहा can है. do, and then I would actually look forward to gaming later on. I have a question. What's your planning about cross-play platform like a PC player playing with mobile gaming, mobile player? Have you any plan for that? No, consciously no, because would be quite unfair to have PC players play against mobile phone players, especially considering it's very competitive, right? Everything that we do is like esports focused and competition focused, and I think it would be very unfair if someone with the best PC equipment, near a server, right, competes against someone that has to play on an older Android phone, and if it's for non competitive purposes, that could be done. It would not be too difficult to route them together in a server. We could think about that for a fun session. What we're doing for certain cheaters, we are matching them then together. So we already identified very few amount of cheaters, but we haven't even implemented everything yet from the anti-cheats. But things like that we certainly plan. But matching mobile phone players with PC players is definitely not planned on a competitive level. We actually strongly advise against it because I think it just would be completely unfair. And console also, you going to be separate? Yeah, any plan Yes. about console? Okay, thank you.
Yes, consoles will also be separate. There we could talk about crossplay in, for example, Xbox versus PlayStation and things like that. We would analyze that closely. So that's something we could look into it. But we're not going to mix. Even PlayStation, Xbox with PC will be separated because it's still too much of an advantage for the PC gamer. And yeah, so consoles is also on our expansion plan. But first, before consoles, we're looking to Android. Okay, thank you. All right, so there was a Welcome. question by Cuba on here कर दिया that hasn't been answered Googly. yet. How will custom games work? Will we be available to create all users custom games or only some people verified by you in case of creating events or tournaments? So can you specifically say the question Like that. again? What do you mean by custom events? You mean custom events for specific beta tournaments that we're planning, मजा आ गया भाई, or मजा what आ exactly गया, are ऐसा you लग रहा referring जग to? जीत ली मैंने. I'm thinking he's talking about Legit if क्या हो रहा है people ये? can अरे create कुछ नहीं their हो रहा. own लोग जो भैया tournaments कैसे हो? within the Very game. fine bro, very good. Is How that going to about be you? created by you guys or by verified gamers? We can think about that. That's something that I would say the community council could propose, for example, right? So we already have this DAO platform that we're not currently बंद कर दे. using अरे भाई सुनो, अभी much, गेम भी which we खेलना should है certainly भाई, गेम भी change, खेलना है. where things like that can be proposed, right? So we have a couple of matchmaking logics where we are able to do You are also matchmaking good, on, very you know, good. pairing certain teams, and we could certainly do matches based अरे on भाई that as निंजा को well. भेजो तो So उसकी the way स्ट्रीम it पे. works in the background is literally certain clan leaders and people have like NFTs, identifiers that they can give to other members, and then they can play together against other teams. I hope that answers the question in that direction. But if there's further questions towards that, you can ping me in Discord as well. To piggyback off of that custom events question, that kind of brings in the idea of What's being he able to run custom explaining about? games What's he explaining about? where He explaining people will about have the the game abilities StrayShot, to bro. launch They are lobbies and developer lobby settings and the content and creator, invite a and we are plethora of also people sitting in order to there host their and own talking events. about this game, this Like kind future, of just and piggybacking when off of the original कब launch question. होगा, कैसे चलेगा, क्या करना है. Yeah. वो चीजें हम Currently, पूछ रहे हैं. for the very near future, not planned yet, because server infrastructure is the thing that वही बातें चल रही है. is the most complicated to build, right? And then we would need to identify, okay, Wolfie wants to play with क्या his हो रहा है भाई, guys अभी भी बताया है, मैंने बार for बार नहीं बताऊंगा. matchmaking, and then he wants to play बस on इतनी this आती है server, जी, and it जितनी आती needs है to be बोल दी मैंने fair. तो भाई, अब मैं What नहीं we can बोलूंगा. do is certainly if there's a non-competitive element in it, so you can then not play and then earn certain in-game currency for that, गुप्ता but को बुला लो purely for the fun of it, we could set up something like गुप्ता that. को So ले this आऊंगा is मीटिंग something में. that we could look at. I could talk to our back-end engineers. What's the गुप्ता easiest को way to बैन do करवा this? दो. It's obviously similar to creating normal matches, and we are switching a भैया core लोग का infrastructure क्या सीन behind है, the कब तक scenes, आएगा? It's either where by something बस like that is probably not too कुछ ही दिनों में. difficult to implement, एक बार मेरी because it's ये like an टाइमिंग orchestrator शेड्यूल on से which हो रहा server है, are we उसके gonna बाद. go on. And it works with all the big ones, apart from bare metal servers that we are renting. लेजेंड क्या सुन रहा You है can इससे? then लेजेंड also go on AWS, on Azure, on Tencent Cloud, on Alibaba, whatever you लेजेंड यही है want. गाइस, ये रहा And we लेजेंड, could do देखो this ना. for community लेजेंड भी यही है, servers as well. So गुप्ता this नहीं है यहाँ would पे. actually be certainly very doable. It was just not planned, so it's not going to happen this year. So in the next 2 to 3 months, this will not be लाइक कर देना available. गाइस, स्ट्रीम को लाइक कर But देना बस. we could समझ target में आ रहा it. नहीं आ रहा, बस लाइक If you करके चले जाना guys मेरे नाम से. vote for something like that, that there ठीक is है. a big community behind it टॉप that स्ट्रीम wants रहनी that, चाहिए अपनी. we can do that. So guys, गुप्ता बोलेगा वन ऑफ we द can फाउंडर बना just दो have मुझे. one more session, one more questions, because the beta session starts in exactly 9 minutes. So we need to have at least 5 minutes in between, so everything is ready. So if there is no questions, then I'll just end this AMA session at the moment. I have one. Sure. So you've made it clear that after the full release of the game, you guys want to expand to more platforms. Yeah. But while that's happening, do you have plans to keep a part of the team to continue to develop more
for the PC version of the game? Oh, 100%. Yeah, no, 100%. So the extension of the Clean platform shave के लिए itself किसने will बोला आपको? never अरे खुद ही कर लेता हूँ. drastically impact the खुद normal का game मन होता है मैं development. कर Because लेता हूँ. first and foremost, I'm we not, want to make the game good bro. and expand on the game, right? So apart from the features that I already mentioned, what I forgot to mention, one of the biggest things that we're working कौन सी on गेम डेवलप करते हैं? ये is स्ट्रे the शॉट ब्रो. अभी animation खेलेंगे हम थोड़ी frameworks देर में. of हमको character स्पेशल एक्सेस है. movement, that everything looks We much are more going to play. smooth and थोड़ी looks देर में much खेल के बताएंगे cooler. आपको. Introduce new levels, new features. I mean, बेसिकली we're बता रहे हैं कि working. लाइक वर्किंग कर रहे हैं काम पे, भी ऐसे कस्टमर्स वगैरह आएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगे, वो इस पे इसका काम भाई कर कौन है? Your mic is open, bro. इसका भाई बोलो. कौन है? सॉरी सॉरी. Okay, no worries. I hope that answered the question. So our focus is clearly to keep the game मैंने कहा, entertaining, always मैंने introduce सोचा new ये कोई things, ट्रांसलेटर आ गया work on बीच the में. stuff that you guys propose. In addition to our plans that we have, that's always the focus, right? The mobile phone expansion and then later on the console expansion is something which I'm allocating maximum 20 to 25% of the resources. So 80% will always be on the core game, and all of आज those आरती features that we're होगी building शिवांशु that भाई are होगी. extending the PC version will इसकी later on, of आवाज course, जरा कम करो. be taken into the mobile phone and into consoles as well. But the focus is literally to गोलू बेटा improve शांति टाइप. literally all aspects of the game, right? Because we still have a long way to go. I mean, we love our game. We love when we're playing it, but we also know that there are shortcomings. There's things that we need to improve upon, and we're working very hard on that. Right. So yesterday was one of the testaments that we're able to convince some NBA stars that played our game. They love it as well. So there's going to be quite a couple of cool events. So you'll be able to play against celebrities later on and things like that. So we're planning a lot of that from the event perspective. But the most हो important गया thing जी. is always the game development. Okay, great. Thanks for your time. Welcome. So guys, for everyone, thank you for joining the AMA session. I hope we have cleared a lot of questions which were actually piling up in the community. And also thank you guys for joining, and thank you guys for spending time with us and asking your questions. We really appreciate that. So our beta session for today, it actually starts exactly in 5 minutes. So let's just end this AMA session right now, and let's be prepared, and we'll see you guys in the game room. And also this time game room, I have enabled streaming as well, so you guys can actually stream your gameplays or anything you want to do as well. So see you guys on the game room in exactly 5 minutes. So we're going to play the game, we're going to enjoy it, we'll take feedback from your end, and we'll update it, we'll improve more. So I'm ending the AMA at the moment. I hope you guys have enjoyed, and yes, Thank you guys. Thanks for your time, and see you in the game in 5 minutes. Take care. Bye bye. Bye bye. Thank you Thanks so for your much. time. See you guys in the game room. We'll head over to a game room. Okay, okay. Thank you so much, sir. Thank you Thank you so so much. much Thank you so much for you. Sure. for your time and for your beautiful game. Really appreciate it, brother. Really appreciate it. So we'll be having the VC and video stream in our game room. So please feel free to join the game room. And if you still have not downloaded the game, go to our official links channel, and you guys will be able to download the game. See you. क्या हुआ? यहाँ से बंद कर दिया गया चैनल? चैनल हटा दिया ये वाला. ला 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 ला. 8 मिनट बता रहा अभी भी.
दिल विच तेरे लिए टाइम कढ के करता मैं हमारे वक्त मिलने आऊंगा। मुझे ब्रो ग्राफिक कार्ड कौन सा है? 3070 जो रूम में स्टार्ट होने वाला है। मैनू पता है तू फैन सलूंगा। गेम दिख रहा है गाइस आपको? आप कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं? क्या हुआ निंजा ब्रो? ग्राफिक कार्ड मेरे पास है गाइस, Asus ROG Asus GeForce RTX 3070। आरपी कब करोगे? बस ब्रो साढ़े 1 घंटा और 9:30 से करेंगे। हो गाइस, ये नया मोड है रूकी मोड। रूकी लीग स्टार्ट 1 2 3 4। तो कहाँ है? भाई रूकी मोड बजाओ, रूकी मोड। ऊपर वाले पे टीम डेथ मैच नहीं है आज, ऊपर वाला है। अरे अरे आना तो है ऊपर, लेकिन ये बताओ कि जो गेम है वो फिर से अपडेट क्यों हो रहा है खोलने पे? अभी तो मैंने अपडेट किया था इसको। साले चमन, अपडेट हुआ ही नहीं हुआ था तेरा। पूरा हुआ, 100% हुआ भाई। मेरा तो मेरा तो 0 का पड़ा अपडेट। मेरा तो हो गया। मेरा तो 1 मिनट में गेम में हो जाने वाला हूँ मैं। तो अब मैं तो खेल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले। तुम कह रहे कि कुछ दिक यार निंजा, ये तो गलत मत किया आपने मेरे साथ। कोई बात नहीं, क्या तुम कर दिया? अपडेट पे लगा कर रखो, मेरी स्ट्रीम चला दो। अच्छा, तुम्हारी स्ट्रीम चला दे भाई। एक बात बताओ निंजा भैया, कैसा लगा आपको? उनके बीच में आप बैठे, इतने बड़े बड़े डेवलपर्स थे, मैंने गेम भाई क्या मेकर्स। तूने देखा क्या? मैंने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस। हाँ, क्या क्या समझ, फिर तेरे को समझ कैसा? में आया मेरा क्वेश्चन? समझ में आया तेरे को? अरे सब मेरे को समझ में आया। आया क्या भाई, पूरा बताओ? समझ। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा बता ना। नहीं, आपने मतलब वो उस टाइम हम अभी भूल गया हूँ, लेकिन मुझे समझ मैंने सब आ पूछा गया। इज दिस गेम अवेलेबल ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म? हाँ 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 मतलब हाँ, ये कह रहे आपका थे कि इंटर चुप 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 चुप। आपके कहने का मतलब था कि आप पीसी और मोबाइल की जो लॉबी होती है उनको हाँ मिक्स हाँ करके कब ला सकते हो। ये बहुत अच्छा वाह, क्वेश्चन लगा मुझे। और यस। मैं भी ये पूछने वाला था, अगर आप नहीं पूछते ना तो अच्छा, चपाट से मैं और पूछने वाला गोलू अरे था। अभी भाई, मेरे आपने दोनों हाँ क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ लिए। तो हाँ। पूछने में यार भाई, अच्छा ज्यादा इमेज बना भी स्मार्ट। क्या था ये? अच्छा, ज्यादा तू तो अच्छा खुद इमेज यहाँ तेरी बर्बाद है स्मार्टनेस के बंदा। चक्कर में तूने हम सबकी लंका लगा दी। हाँ, कैसे? हम वो वाला क्वेश्चन मैं पूछने वाला था जो तुमने पूछ हाँ, दिया। और फिर मैं अटक गया, मैंने कहा यार ये कैसे यार। अरे बहस की मेरे को बोला गया कि दो दो वो पूछने क्वेश्चन। अरे हाँ, दो मैं दो एक के दो हाँ, कंटिन्यू ये दो तो थोड़ी तुम्हें पूछ कैसे लेगा। इंडिया एंड आई एम सर्चिंग फॉर द मैच। का मुझको शौक है बड़ा। आपको बीच बीच में या करना था। हाँ, या डेफिनेटली किस तो या। और ये वापस अपडेट पे चला गया। हाँ, अब पता चला, आपने अपडेट तो किया था ना ढंग से। हाँ, हैं? मैच क्रिएटेड सर्चिंग फ्रॉम सर्वर है। कितना टाइम आ गया। बता रहा है? मैं तो मैच में 0% आ हो रहा गया। है मेरा तो अपडेट का। आपका मैं तो तो हो रहा है मैच में अपडेट? आ गया जी। और हर्ष ब्रो कैसे हो? मैं आ जाऊं जी। रिजी वर्मा जी, लव यू जी। बाय द वे, आर यू एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम? यस अच्छा तुम विवेक। दोबारा कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारा यस 8 टाइम खेलना है ना यस, तुमने? चल गया लीग ऑफ सर्वाइवर्स। कितना मैं टाइम तो बता रहा जो तेरे? खेला था वो इनफ नहीं था। अंदर घुस गया जी। मेरा वापस अपडेट हो रहा है। मेरा तो अपडेट में फ्रीज हो गया कैसा अभी? अबे मेरा लोंडा पकड़ गया। 12% हुआ मेरा, 12% हो गया है। भाई क्या सीन है? 0% भटक अबे गया चुप मेरा, जो चुप नेट चुप, वेट चलती है। स्टोरी सुनो। देखो देखो जाना। अबे निंजा भैया, इसकी बैंड की। मैनू पता है तू निंजा भैया भूलेगा ये तो तगड़ा लग रहा है। मुझे भी देखने दे, मैं भी देखूं तेरी स्ट्रीम। Caution is brain fried, and those who are after him might be armed and dangerous. As usual, your compensation for capturing the fugitive will be in the form of a secure and untraceable cryptocurrency. अरे If you are caught or killed, we will deny any knowledge of this मैं आ operation. गया। Good luck. मैं आ गया। अब क्या करना है इसमें? मारना है तुझे? 40 सेकंड, 40 सेकंड। लॉबी है, लॉबी बन रही है, लॉबी बन रही है अब 40 अपनी। सेकंड, 40 सेकंड। लॉबी है, लॉबी बन रही है, लॉबी बन रही है। मेरा तो हुआ ही नहीं सदर फका ब्रो। मेरा तो हुआ ही नहीं सदर फका ब्रो। शौक है बड़ा, शौक है बड़ा। ओ भाई, एक बात बताओ, तुम्हें ये गेम कितनी बार खेलनी है?
भाई अच्छा गेम है, हम तो भाई अच्छा अच्छा गेम है, गेम है, खेलेंगे अभी अब भाई। कल तो। कल फिर खेलेंगे, कल हम फिर तो खेलेंगे। भाई परसों भी बहुत खेलूंगा, बढ़िया तरसों भी भाई, खेलूंगा। भाई चैंबर बहुत ही खेल रहे कम हैं गेम बहुत भाई। मुझे पसंद है ये पसंद हमको आते हैं, तो। उनमें से हम एक ही तो है ये। भाई हाँ भाई। मैं तो फिर चलो तेरे तुम बीजीएमआई के ऐसा बाद करो, यही इस पसंद आ महीने रहा है पूरा भाई। यही वाली गेम खेलो। यस, इस महीने हम पूरा हाँ टाइम यही बिल्कुल, खेलेंगे। पूरा यही खेलेंगे बिल्कुल। अबे ये तो यही हेलीकॉप्टर में पसंद आ आ रहा है गया, भाई। अरे स्कीम में आ गया। अभी मुझे नहीं लिया हाँ लॉबी में, रुक बिल्कुल, जा। पूरा यही अब लिया खेलेंगे। लॉबी में। हम तो बोलेंगे आप भी अबे खेलो, एक बार ट्राई तो हेलीकॉप्टर में करके आ देखो गया। ऑन ऋषभ स्ट्रीम। भैया लाइव नहीं आएगी ब्रो अभी तक। अरे मौत चूत, ये तो बीजीएमआई जैसा लग रहा है। हम तो बोलेंगे एक लौंडा जा रहा है, एक लौंडा जा रहा है गाइस, मेरे साथ ही जा रहा है, इसको पहल दे, पेल उतरते ही दूंगा। पहल दे, उतरते ही आप भी पहल खेलो, दे, एक बार ट्राई तो करके देखो ऑन स्ट्रीम। उतरते ही पहल दे। से आई ग्राफिक कम किए, हाँ ग्राफिक थोड़ा कम कर दिए। मेरे घर आई एक नन्ही परी। एक लौंडा जा रहा है गाइस, मेरे एक साथ बंदा ही जा और रहा है, है। इसको पेल दूंगा। ये करिश्मा कपूर की मूवी का गाना है ना ये, बहुत ओल्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे घर आई एक नन्ही परी। अभी आई यहाँ आई आई तेरे घर एक अभी यहाँ नन्ही तो परी। लूटी नहीं है, यहाँ तो लूटी नहीं है भाई। लूट वूट छोड़, तो मर गेम खेल जाएगा। रहा हूँ। गेम खेल रहे भाई हो, क्या स्ट्रे कर रहे शॉट खेल रहे हैं भाई, स्ट्रे शॉट। नाम सुना है तुमने इस गेम का भाई? अबे मैं तो अंदर, अरे मैं तो जेल में फंस गया, बोलड़ी निकलूं कैसे इसके बाहर? ओए लेजेंड गाली नहीं। मेरे घर अच्छा, क्यों हम लोग तो अपने सर्वर पे बैठे ना। अबे यहाँ से क्या होता है? वो जब मना कर रही है गाली नहीं तो गाली नहीं। अबे तो तुम चली जाओ, गाली नहीं यार, गाली तो देंगे ही यार, मजा नहीं आता यार बिना गाली के भाई। स्ट्रे शॉट खेल रहे हैं भाई, स्ट्रे पूरा शॉट। अच्छे से पढ़ा नहीं। नाम सुना है तुमने इस गेम का भाई? अच्छा 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 अच्छा। नो गाइस नो। मैं अपने लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ यार। चली नो जाओ, गाइस नो, अरे गेम देखो। मर गोल गया। चली जाओ। वाह जेल में भाई फंस गया लेजेंड, जेल में फंस गया। चली जाओ लेजी, चली जाओ। नो भाई, मेरे 69 को वॉच रहने है। दो, तुम चली जाओ। लेजेंड अबे जेल से बाहर कैसे निकलेगा तू? गाली नहीं यार, गाली तो देंगे ही यार, मजा नहीं। करीम भाई ने मुझे पेल दिया भाई। लग रहा है इसने मिल गया तू? अच्छे से पढ़ा नहीं। हाँ, देयर आर गाइस नो अब्यूज, नो गाली एंड ओनली चुप जा। ओनली ताली। बुलाए गेम में। बहुत बुरा मारा गो लेजेंड को तो अबे यार। एक और बार खेलते हैं गाइस, अब की बार ना, अब की बार कोई मार के ही दिखा दे, अब चुप जा, की बार मेरा कोई अपडेट मार होने के। वाला है। 60 49 हो गया। अब की बार तो जीत के जाऊंगा इस मैच में, कैंप करके खेलना क्या अपडेट पड़ेगा हो रहा है आपका? क्या अपडेट हो रहा है? वापस से अपडेट हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। भाई। ये तो जीतना ही है भाई, एक चिकन तो निकाल के मेरा रहना तो है। 0% अगर का तो पड़ा है अपडेट के स्ट्रे साथ। मैं भी शॉट की खेल रहा ड्रीम हूँ, अरे करोगे तो सूर्या भाई मेरी तुम तरफ भी से खेल रही हो, 5000। आओ फिर। अच्छा, मैं बताओ खेल क्या ही नहीं खेलना रहा। है? ऑन करना है रुकी ना। रुकी लीग, रुकी लीग। रूकी रॉकी लीग खेल रॉकी रही है, लीग। रूकी लीग। रॉकी रुकी है वो। लीग। रॉकी लीग जो भी है। रुकी लीग 70% हुआ खेलनी मेरा, है जी। रुको रूकी लीग कह रहे हैं, ये आ रहा देख हूँ लो। मैं। अबे निंजा भैया, क्या है? ग्रुप में मैसेज देखा? हाँ। ओ इतनी देर तेरे टिकना है लिए क्या? क्या ना चलेंगे, निंजा चलेंगे भैया इतनी देर सहारा। टिकना है क्या? निकल लेंगे रे। निकल चले, हम हाँ चले, चले। जादू गेम तन में भाई, लैग चले। मार रहा है। लैग, रुको गाइस, रुको, अभी आ अपडेट रहा होने हूँ दो तब नहीं स्ट्रीम मारेगा। स्नैप करके मारने भाई, तुम सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया है यार। तेरे को क्या मैच सर्चिंग बताते हो रहा तुम है क्या? भाई, ये इतना तुम सब डाउनलोड कर लोगे, ये सब पता होता है पैसा बढ़ गया, मतलब अच्छा पापी पेट के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग सारे बैठ के सर्चिंग वो। फॉर हो गया। मैच हो रहा है जी। आ जा, हो रहा सर्चिंग है, फॉर रुको मैच। रुको। अभी मैं भी आने वाला हूँ बस। 86। मेरे घर आई 20% और है। एक 20% नन्ही नहीं, परी। कितना का, कितने की 13% और। है गोलू ये गेम? 5 17 जीबी का, हजार 5 जीबी जीबी का। व्हाट द फक, 1% हुआ मेरा इतनी देर में 5 भाई। जीबी 5 जीबी का 1% हुआ गोलू भाई, गोलू अपडेट भाई। मेरा। वापस काट के कर, काट के कर। 150 रुपया लेगा, 150 रुपया काट ओवर एक्टिंग का हाँ इसकी, सचिन, 1 150 रुपया। घंटा है। काट के कर फेस वापस। कैम करो साई होए, अभी फेस कैम नहीं कर पाएंगे भाइयों। हाँ जो बता दे, जो कल आरपी जो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट आरपी होगी कल की हमारी, ठीक है? तो कल वाली स्ट्रीम मिस मत करना, तुम लोग को ही नुकसान है अगर किया है ना निंजा भैया, कल ही गए ना। यस, कल वाले आरपी तुम सो लोग ये इम्पोर्टेंट। खेल के आज भी आरपी जाओगे सीधा? नहीं ओके। तुम बताओ कहाँ आ जाए उसना जी, मैं आप तो बीजमाई बताएंगे। कर रही हूँ, देखो तो मेरा तो हम आ फिक्स है पहले जाएंगे बीजमाई। खेलने यार, आपके साथ कैसी बातें करनी है उसना तो जी। आई विल बी गोइंग तेरे लाइव इन 10 लिए। मिनट्स आई गेस। हाँ तो तुम करो ए, 10 स्कार मिनट। भी तो व्हेन खेल विल रही यू है, गोइंग टू स्कार के जॉइन? साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती तुम, तो बेचारी अकेले खेल ज्यादा हो रही है। जाएंगे ना, फिर वो भी कार के साथ तो मैं खेल लूंगी, लेकिन फिर हमारा स्क्वाड बन जाएगा, फिर अलग तुम्हारा फिर अलग हो जाएगा।
अबे कल तुम्हें पता है देखना हर पड़ेगा मैच ना में 15 कौन है। 15 किल पेले हैं मैंने। कल तो तो कल इंडिया मैंने वर्सेस भी 15 पाकिस्तान किल के देखना। साथ चिकन किया है आखिरी नेड के तुमने साथ, एक ठीक में है। किया, हमने कल जितने भी मैच खेले सब में भाई बट बहुत आई मार। वाज प्लेइंग विद रैंडम्स माय फ्रेंड। और स्टार्टिंग हमने बैटल भी अपनी रैंडम आई के वाज साथ ही प्लेइंग विद खेल रहे थे कल। अपलोडिंग लॉज। ओ तुम रैंडम के साथ खेल रहे थे। मेरे अच्छा। घरे आई एक नन्ही नन्ही परी, परी। नन्ही परी। सर्चिंग फॉर द मैच गाइस, सर्चिंग फॉर द मैच। शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। वेटिंग में बैठने को बोल दो मेरी उसको। तुम्हारी आवाज वैसे बड़ी कम बॉलीवुड आती है में यार। हैक Can यूज we किया why do this? उसना, उसना। क्या? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा ये नाइट आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों क्या हो गया इन लोग को। हाँ मैं भी अभी तुम्हारा लिटरली सर्चिंग पर मैच हो रहा है क्या? पहले से मेरे को मिलना था। कोई ब्लॉक्स है ना? कष्ट कर लिया करो, कोई कष्ट कर लिया करो बताने का, वीसी आए हो। अरे शुक्र अबे है मुझे यार। कुछ पता है, एक ऐसी सिचुएशन में मैं फंस गया था बक्का भाई कि मुझे सर्वर से किक कर दिया, फिर मैंने सोचा क्या करूं, कौन कहाँ है कैसा रिजा है। कैसे हो? फिर लाइव मैंने पर आपकी हिम्मत टाइम नहीं बाद हारी और आता है मैंने वो ये वॉच वीसी ज्वाइन ऑन किया अकेले। प्रोसेस। थैंक फिर यू वेरी देखा मच कि सारा जी, मेरे वेलकम। पीछे तो कोई गोलू बात भी नहीं। है, निंजा भैया भी है, अच्छा। लेजी भी है, चारों आ गए। लेजी को तुम तुम्हारा लेजी सर्चिंग तुम पर मैच हो रहा है क्या? डिस्कॉर्ड बस पे। मेरा डाउनलोड हाँ हो रहा है। मेरा हो रहा है। शांत भाई, आ जाओ तुम जाओ, लोग एक ही तो मैच में आने वाले हैं जहर हो अपन। यार, तुम मिल जाओ ना, चुम्मी ले लूं तुम लोग की एक एक। तुमने भी डाउनलोड किसकी? कर लिया? नेट में फ्रीज हो गया। अबे इन सब ने डाउनलोड कर लिया यार। हाँ तो ये आएंगे हमने भी अपने कर मैच में लिया। आएंगे। लत लग जाएगी भाई, इसको मैं बोल रहा छोड़ हूँ पहले भाइयों, लत लग ऐसे ही मेरे लिंक के साथ डाउनलोड करते रहो, ऐसे ही मुझे ला ला फ्रेंड्स ला आए तो ला कहे ला ला। लेजेंड के कल मैच पास देखने जाएंगे, जाओगे ना उसके ब्रो? लौंडे बहुत कल अच्छे मैच नहीं हैं। जा मैंने पाऊंगा सुना यार, है एक्चुअली भाई। मेरे पास टिकट पड़े हैं, 4 टिकट किसी को चाहिए तो बता दो। पहले नहीं पता, ना पापी पेट मैं के भी थे। क्विट करना है। लेजेंड भाई मैच हो लग जाएगा, गया? हो जाएगा। नहीं सब एक साथ रहो, हो जाएगा। जब उसको प्लेयर्स मिल जाएंगे तो एक साथ डाल देगा वो। लेजेंड भाई ओके। अपना भाव बढ़ाओ, सारे व्यूअर्स गेम डाउनलोड कर रहे हैं, भाव तो बढ़ा हुआ है जी, डाउनलोड करो सभी हमारे से भी। भाव तो बढ़ा हुआ है जी। अरे अबे ओ अच्छा तो है पर ट्राई नया नया करते रहना चाहिए, ठीक है? अच्छा तो वही बिल्कुल सही नेट बात बोली, इसी के लिए भाई ताली हो जाए एक बार इसी बात के लिए भाइयों। भैया, आपको नहीं लगता नेट क्लैन के न्यू लीडर निंजा भैया होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मैं तो उन्हीं को वोट कर दिया मेरे हूँ को 100 चाहिए, क्या वोट। चाहिए न्यूज़ भाई? टू टिम थिंग्स, टिम तुम हो स्केटबोर्ड विषय की में? स्पीड, जंप बटन बिल्कुल प्रेस हूँ, मैं चिप्स खा रही है हूँ। कैसी हो? रखे कहाँ गायब तो रहती हो ज्यादा बताओ? मिलेगी करवा एंड लेंगे STRP तो मैं पानी क्या पे भी करूँ चलता आगे? है। हाँ, मिली सारा नहीं चीजें अभी पता तक चल तो जाएगी मेरे मेरे अलॉटेड को। को। सर्वर्स फॉर बेटा आर फुल, मुझे मिली कुछ प्लीज नहीं समझ भाई नहीं आगे। आ रहा। कोई दिक्कत नहीं गाइस, अच्छा कभी भी ठीक है, ऐसी तो प्रॉब्लम आया आपको करो ना। आए तो आपको क्या करना है, ये जो लिख के आया था ऑल बेटा सर्वर्स आर फुल, तो आपको फिर से जाके फिर से करना है, और कुछ नहीं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। फिर से बाहर आ जाओ, बैक बटन दबा के फिर से रुकी लिखी क्लिक कर यस, दो और बैठो मस्त। गेम मस्त है। इतना इजी है गाइस, बताओ कोई मेहनत लग रही है? बताओ, बैठे हैं मस्त तुमसे बतिया रहे हैं। मेरे को लीडर सर्चिंग निंजा फॉर लीडर। मैच ही है मेरा तो। ना मेरा भी हाँ है है असिस्टेंट क्रेड भी कभी खेल लो प्लीज, देखते हैं सारा जी खेलने है के। कुछ बोल रही हो? मैं कुछ बोल रही हूँ? कुछ बंदा क्या है, बंदा क्या है? आ गया जी, आ गया, मैं आ गया, ओए मैं आ गया, गेम में आ लग गया। गया। निंजा मैं भी भैया आ कहाँ गया जी, मैं कूदा भी है? आ ओए गया। देखा, मैंने कहा था गाइस, तुमने मुझ पे भरोसा रखा, फिर से चालू हो गया। मैं भी ओए आ गया। फिर से बाबू चालू भाई हो गया। बोल दे गेम घुस के अंदर आ गया। गया तू भी? घुस गया, ओए घुस गया। घुस गया, पूरा घुस गया जी। ओए अपन एक साथ करते हैं। ओए मैं तो लग गया, लोडिंग हो रही है। Simon Brainfry, Disclaimer. founder of Collapse cryptocurrency exchange निंजा भैया टीम अप WTF, had करके been खेल सकते arrested हैं for क्या? allegedly team embezzling up करते, billions team of up करते dollars हैं। of customer funds, करते, team up conspiracy करते। to commit money laundering, and securities fraud. Last month, he was mysteriously कहना released from है। custody, and since yesterday, he has gone missing. Our intel suggests that Brainfried is hiding on this island. Your objective is to locate and escort him to the designated secure facility. Once captured, you will be provided with specific location instructions which might be intercepted by others who are also after him. We advise you to maintain a low profile and operate with extreme caution, as Brainfried and those who are after him might be armed and dangerous. As usual, your compensation for capturing the fugitive will be in the form of a secure and untraceable cryptocurrency. If you are caught or killed, we will deny any knowledge of this operation. Good luck. अबे ये कौन है जो मार रहा है? ये कौन ओए है? अपन को बचाना है इसको। होती है मतलब चिंता तो हो ही रही हाँ, है। तुम्हें कुछ ज्यादा चिंता नहीं होती है मेरी? यार नाजुक लेजेंड हो तुम गए हो यार। कमजोर हो यार, लेजेंड कुछ खाया करो यार, लेजेंड जिम ज्वाइन कर लो, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं होती है मेरी? मैं मैं वही तो यार। बाबू भाई। यही तो बोलती हूँ यार, यही तो बाबू दोस्ती भाई। है हमारी। यही यही मतलब ये दोस्ती दोस्ती है ना, क्या तुम इतना यही चिंता दोस्ती करती है हो यार, मेरी? दोस्ती
प्लीज क्या यार। यार यही लेजेंड यार, तुम यार कुछ खाते नहीं हो लेजेंड, तुम पतले हो, बस जल्दी से मोटे हो जाओ लेजेंड, ये करो लेजेंड, वो करो, बताओ हाँ क्या लेजेंड करूं उस्ना और जी। क्या लेजेंड अरे अच्छा उस्ना वो जी करो। बताएं यार, आप जो जो हम बोलेंगे तो वो अच्छे सब के कर लिए लेंगे। तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें हाँ अच्छे के लिए मेरा सजेस्ट करेंगे मेरा ना। इतना अच्छा तो मेरे अपनों ने नहीं सोचा जितना तुम सोच रही हो यार उस्ना यार, चलो नहीं क्या तो वो है। सोचेंगे तो तुम्हारी थोड़ा सा अपनी मुझे नहीं है। बताओ। बहुत अपनी है, तभी तो मैं कह रहे तुम्हारी कुछ अपनी ज्यादा नहीं ही हूँ ना। अपनी नहीं लग रही बग्गा भाई आजकल, है ना। लो बताओ। मैंने तो तुम्हें शुरू से ही अबे कोई नहीं कहते, दुनिया एडवाइस का दी है, तुमने नो कोई नहीं कभी गेम नहीं स्टार्ट हो कहते। गया, किया। गेम स्टार्ट हो गया, गेम आगे स्टार्ट प्लेन हो में आगे गया। भाइयों। सुन डायरेक्ट वो जेल में नहीं बंदा जाना है, उतर सुन गया। अपना प्लान है उस बंदे को ढूंढना है, क्रिप्टो करेंसी वाले को जो भाग रहा है। अच्छा एफ से हम कूद गए भाई हैं। तुम लोगों को हेलीकॉप्टर दिखने लगा, हाँ हाँ मुझे मेरा भी तो दिखता अटक है। गया। अटक गया। अटक क्यों डाला फिर? अटक गया जो। लेजेंड यार अबे तुम अटकने में लग गए हो मैं यार। सबसे पहले मैंने घुसेड़ दिया अपने बंदे को, और फिर वो अटक गया बीच में ही, पूरी तरह से घुस नहीं पाया, बीच में ही अटक गया, क्या तरीका है ये। तो बंदे दिख गाइस गए हैं हमको। जा माथा मत खा। मैं जा रही हूँ बीच में ही। आ एक जाओ बंदा तो मेरे दिखा को मेरे को, उतरते रिजर्वेशन ही डाल पेल देना, दूंगा सब साले जगह को, रैंडम उतरते ही ही। पेलूंगा इसको। ए उस्ना जी ओ कहाँ जा रही है यार, इधर ही भाई रहे ना उस्ना जी यार। हाँ हाँ तब तक हमको रैंडम पता ही थोड़ी सबसे है बस वो तो कहाँ मेरा हो तुम। उस्ना जी बोले लेजेंड जी। रुक जा। कहाँ जा लिजलैंड जी रही हो बोलो, यार, लिजलैंड कहीं जी। नहीं जा रहे, आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, कैसे आप हमें जाएंगे। छोड़ लाइव के हूँ मैं कहीं अभी। नहीं जा सकती क्या। वही तो, कहीं चले भी जाए तो वापस यहीं आ जाते हैं मुड़ के, कैसे जाएं। सीन चल रहा है भाई अरे मेरा। अरे उस्ना जी बस करें, आप क्या कर रही हैं। ये देखो इनकी आरपी यहाँ शुरू हो गई है। आरपी नहीं यार, ये आरपी थोड़ी है, छोड़ो छोड़ो। छोड़ो छोड़ो अब छोड़ो नहीं बोला भाई, जा रहा कुछ। छोड़ो भाई, मत। अब तो मैं ब्लश कर रहा हूँ। ओए मगर चोट बंदा खड़ा है हमारे सामने, गन कैसे आती है गाली हमारी। नहीं देनी है बग्गा भाई, अरे आपकी सॉरी लिमिट। सॉरी अरे मेरा सॉरी लिमिट सॉरी। कब हुआ अगर को बग्गा भाई, अबे तुम्हारी सॉरी गाली सॉरी। की वजह से, ये पापी पेट ये को तो हुआ। सुनो, मैं ये बताता हूँ। बताओ गन कैसे बाहर आती है। चुप हो जाओ, 1 2 अबे 3 से। गन कैसे बाहर आती, पेंट 1 2 उतार 3 दो और पीछे की डली खड़ी होगी तो ले लो ले लो, आ जाओ तो बग्गू भाई, मैंने तुम ही यही लोगे बात। आके फिर। अरे रुको तो बग्गा भाई, मेरे में लिख के आ रहा है ओएक्स बैटलग्राउंड गेम अटक गया, क्या क्विट करके वापस आऊं। बंदा तो यहाँ पे भी है। भाई बंदा यहाँ पे भी है। इससे गन देनी है मेरे को। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, मेरी फट रही है। मेरे पास एक बंदा ठीक है होता था, ठीक पता है। नहीं कहाँ चला गया। तेरी बहन की। अरे तुम हो गया निंजा भाई, तुम हो गया, ये तुम हो गया। नहीं मैं नहीं, मार मैंने तो मार दिया मेरे पास वाले बंदे को। मेरे मार को दिया इसकी लूट कहाँ है? सस्पेक्टेड कर रहा हूँ। निंजा भाई तुम भी थे ये। नहीं था क्या ये? मेरे हाँ, को तो कुछ भी थे। गड़बड़ लग रही है स्टार्टिंग से ही, जब आप लोगों से मिला था, बट मैं कभी बोला नहीं है। क्या गड़बड़ लग रही है तुम्हें? ऐसा तो कुछ नहीं है जी भाई। एक बंदा पेल दिया मैंने। मेरे को पहला तुमने। कोई बात नहीं, किसी को तो पेला। थैंक्स फॉर सपोर्ट ब्रो। एसएमजी जी तुम पे। पहले तो नेट मार दिया, पता नहीं क्या मारा है। नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, नीड वेट मैंने नहीं मारा। तो कौन फाड़ दिया। कोई और था वो। मेरे पीछे तो तोप भी है, एक तोप थी तेरे पे, तोप। ना मेरे पे कुछ नहीं था। नहीं मैं जिसने तेरे को मारा उसके पास तोप दिख रही है तेरे को। अबे मैं फिर से गेम में आ गया यार। ना अब अभी ये कोई खड़ा है ना, अभी एक जगह खड़े हो जाओ जरा। बैठ गए अभी, बीजीएमआई जैसा बड़े बड़े बैठ गए अभी आप। नहीं मैं नहीं हूँ। अभी हो? अच्छा ठीक है, फिर तो कोई अंदर डल्ला ही डाल है। देता है भाई। द इवेंट्स कैरेक्टर। हाँ तोप तो है इस पे वैसे, तोप शॉटगन दोनों है, एसएमजी भी है। इधर उधर जाओ। मिल गए। अब देखो तुम मेरा गेम। तुम लोग मर गए क्या, तुम लोग मर गए? मेरे को पेल दिया। मैं मर जाऊँ, ऐसा हो पेल सकता दिया है? तुमने? किस में पेल दिया? पता नहीं यार, मार दिया मतलब गेम के अंदर। रिपोर्ट कर दो। नहीं नहीं नहीं, रिपोर्ट क्यों करें। उसी वाले ने मेरे को बम मार दिया। बम फेंक रहा है साला। जितने मर्जी आओ ना। उनको बम से मार दिया यार, ये तो मैं भूल ही गया था। भाई टीडीएम भी मजेदार वो है ये वैसे। शॉटगन, स्नाइपर्स, एएमआर सब लेके चल सकते हैं इसके अंदर। टीडीएम भी मजेदार है ना।
और जल्दी आओ, नई लॉबी बनाते हैं। है बाहर है क्या? बाहर आ जाओ, रिटर्न अबे टू द बाहर मेन। क्यों आना है? जो मर गया वो बाहर आ जाओ। पक्का? हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। नई लॉबी बनाएंगे भाई। मेन्यू ग्राफिक्स मैंने कम कर रखे हैं, मेरा पीसी लैग होता है यार। मस्त खेला तो मस्त था यार, बस थोड़ा सा और फेल देता था भाई। ये बम बम का नहीं पता था यार, बम बम भी मार सकता था। एम से मैंने उसको एम इतनी से गोलियां एम मारी, से। उसने सिर्फ एक बम मारा। निंजा भाई कर दूं क्या? उस पे दबा दूं? हाँ रुकी पे लगा दो, मैच मिल जाएगा तो हो जाएगा स्टार्ट। कर दिया जी, कर दिया। क्या हो रहा है? ये क्यों टकरा है इसकी? तो हो गया है। पीसी गेम है या मोबाइल? अभी तो पीसी पे ब्रो, अपकमिंग टाइम पे ये मोबाइल भी आने वाला है। निंजा दादा सच में मैच टिकट है आपके पास? मेहुल भाई नहीं है, मजाक कर रहा हूँ ब्रो, तुम सीरियस मत हो क्या जाओ। हुआ? अबे घरों में जाओ, घरों में होगी गन। लेजी अभी तक जिंदा है? उसको मिला नहीं कोई भी अभी। तुमको भी कोई मिला नहीं है भाई। मार रहा है कोई, मार रहा है कोई, बोल रही मार रहा है। गई। आ जाओ तुम भी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। रुक जा, मैं आ रहा हूँ भाइयों, भाई राम राम भाई सारे। एक बार अच्छा लुकिंग हैंडसम टुडे, थैंक यू वेरी मच स्वारा जी, थैंक यू वेरी मच। गन से नहीं मार पाए, गन से नहीं मार पाया साला, अपने को बम से मारा है। तब तो 1v1 आता ना। मेरे को वो वाली गेम याद आ रही है। प्लेयर थोड़ा भागता है, इसको सही करो। सुनो, अब मेरे घर का गेम है। अबे मेरी बात तो सुनो। अपन सब करते हैं टीम अप और सब एक जगह कूदते हैं। और भाई देखो सब आ ही नहीं पाए करना ना, है। सब आ ही नहीं पाए। देख लो बैन पड़ना है तो लगा दिया आपने, रुकी लिंक पे क्लिक कर दिया। हाँ सर्चिंग फॉर मैच हो रहा है, ठीक है। मेरा इनिशियलाइजिंग हो रहा है, सर्चिंग फॉर प्लेयर्स। सर्चिंग फॉर सर्वर हो गया, ठीक है। मैच क्रिएटेड हो गया, आ गया। अब की बार गांड मार देनी, ठीक है। मेरा भी हो गया, मेरा भी हो ठीक है सब आ गए। सुनो एक जगह कूदना है और मार मत देना सालो एक दूसरे को। जगह का नाम तो बताओ। अभी तो अंदर तो जाना, तो मेरे को तो याद है। ये बार ये साला ये बताता है। हमें स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन शेयर नहीं करना है अभी। नहीं प्रिजन के अंदर नहीं जाना। क्या तुम लोग उड़ने भी लगे क्या? नहीं अभी तो लेज़र तुम्हें मैप कैसे दिखा रहा है? मेरे को तो ये दिखा रहा है मेरे पास एम। अच्छा एम से मैप दिखाता है, पर मेरे को तो अभी ट्यूटोरियल आ रहा है। तुम लोग को स्टोरी सुना चुके? स्पेस बार प्रेस करो लेजेंड। कर दिया स्पेस बार। which might be intercepted by others who are also after him. We advise you to maintain a low profile and operate with extreme caution, as brain fried and those who are after him might be armed and dangerous. As usual, your compensation for capturing the fugitive will be in the form of a secure and untraceable cryptocurrency. If you are caught or killed, जाना का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सुनो अच्छा 50। सुनो इस बार कूदना है अपन को, अपने को करना शैडो टूम में। शैडो टूम ठीक है। शैडो टाउन सॉरी 40 सेकंड चल रहे हैं, 40 सेकंड चल रहे हैं। शैडो टाउन में कूदना, ठीक है गाइस। शैडो टाउन में कहां कूदना है, कहां कूदना है? शैडो टाउन। ओ बंदा देख गया। बग्गा भाई डेली जा रहा हूँ ए मरीना, बहुत चल रहा है। जाते रहो बस यही काम करो। हाँ बिल्कुल फुल बहुत स्कोप है इसके अंदर, दूर पे करेंगे आपको है ना। हाँ बिल्कुल। अबे ये तुम लोग हो क्या? क्या ये तुम हो गया? ये कौन है? गोलियां खत्म होगी मत बताओ। आगे प्लेन में आगे। अबे शैडो कूदो शैडो टाउन ये रहा, इधर ही है। भाई मारना मत यार। पर अपन पहचानेंगे कैसे ये बताओ? एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? अरे बस पहले मारना मत। इसमें नाम तो दिखता है भाई, कैसे नहीं चला? दूसरे चला दी तो। सुनो ना ये टापू दिख रहे हैं। मैं घरों पे जा रहा हूँ, देखो घरों पे। टाउन पे जो डी करके 5 घर है, नहीं 5 जो घर है वहां जा रहा हूँ। 5 घर है, 3 2 5 डी करके। हाँ मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं टापू पे जा रहा हूँ। टापू पे ये टापू पे कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। देख मैं एक घर में मैं आया। देखो ये आपके ऊपर मैं हूँ, आप ही हो ना। ये उतर गया मैं। अगर आप ही हो तो रुको। अंदर घुस गया, देख मैं अंदर घर के अंदर घुस गया हूँ। अब बस आप ही हो। ये मैं हूँ, बाहर अभी आया हूँ। और अभी मैं घर में हूँ, ठीक है। अंदर जाओ वो तो हम क्या करें? ये तू ही है? हाँ ये मैं हूँ, मारना नहीं। हेलो
इधर इधर आपके इधर हूँ मैं। हाँ ये दिख तू रहे ही है हो? ना, ठीक है ये तू ही है। हाँ मैं ही हूँ, मैं। साले मार दे तो लंका लगा दूंगा। अरे जाना कहाँ से है यार? हमको भी लूटना है कुछ, हमको भी चाहिए कुछ। बिल्कुल सही बात। तुम लोग कहाँ हो? छोटे छोटे घर जो पानी के किनारे हैं उधर हो ना? हाँ उधर ही है। आ जाओ उधर ही है, ये ये तुम हो। देखो मैं आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तू ही है, आजा आजा आजा। हाँ। ये निंजा भाई। उस साला गाड़ मार दूंगा, मेरे को मार दिया तो। अरे टापू आओ टापू, ये देखो टापू, टापू है इस साइड पे। अरे टापू नदी गाड़ मार दूंगा, पेल दू कर रहा है। मतलब अरे जो क्या पेल दू भाई? रखे घर यार। ये तुम हो? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ओए कौन है ये स्नाइपर है जिसपे? ये कौन है? ये लेजी को बुलाओ तुम। मैं लूटू तो सही यार कुछ तो। मैं लूट ही नहीं पा रहा, कुछ बताओ। अबे तुम हो किधर लेजी? शैडो टाउन पे ही हो? तो शैडो टाउन पे देखो ना, मैप खोल के टापू से बने हुए हैं यार। अच्छा अच्छा उस पे नहीं बने, मैप पे नहीं बने। एक गोली चलाता हूँ ठीक है। टापू होता है जो पानी पे घर बने होते हैं यार, पानी पे बने होते हैं ना घर। अरे कौन है मार रहा है जो? नहीं मार रहा हूँ, तू यहाँ अभी आया, मैंने तो पहले ही चला दी थी हवा में। साला तुम्हारे पहले हूँ मैं। मार रहे हो, मारे जा रहे हैं, मारेंगे खोपड़ी पे। आओ उसको ढूंढते हैं लेजी को। लेजी तुम घरों पे हो? शैडो टाउन के तीन बंदे हम साथ में। मैं एकदम साइड में पानी के साथ। पानी के आओ ढूंढते इसको, ढूंढते हैं। चलो सुनो, अपने को उस बंदे को ढूंढना है, समझे? ठीक है। हाँ ये हम ही है। ये तुम ही हो, घरों के पास आ रही है जो तुम ही हो ना? आ जाओ अपन चार, अब गांड मारनी है। आ जाओ अब जो दिखते हैं इसकी गांड मारनी है। आओ चलो 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 चलो। कहाँ खो गए तुम लोग? कहाँ रह गए तुम? ये रहा बे। आओ ना आओ। कहाँ गई? कहाँ गए? आओ चलो ये रहा, तुम लोगों के पीछे ही हूँ मैं। हम तीन ही हैं। मेरा पीछे हूँ, देखो पीछे एक मैं हूँ, चारों एक कहाँ गए? मुझे तुम तीनों दिख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, देखो सबसे पीछे मैं हूँ। ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाता है। ओए लगा हमको कुछ हुआ है। चलो घरों में से सीरीज वीरीज उठाते रहो, क्रेट वेट खोल के, समझे? हाँ जी डन है। नीड बस वेट साथ में रहो, इतना है। साथ में रहो। हमारा वो साथी खो गया। अबे ओ इस तरफ ही रहो, इस तरफ ही रहो। अबे वो क्रेट खोलने लग जा। ये तुम हो? ये कौन है? अरे तो साथ में रहो ना, तो साथ में रहो। हाईवे। अबे रुको यार, साथ में रहो साथ में रहो ना। ये रहा। नीड कैसे फेंकते थे? लेजेंड लैंड भाई, मारेंगे, मार रहे हो हमको जो। भाई पिस्टल से मारा है भाई। गाली मत दो, गाली नहीं। अच्छा ठीक है। अबे वो बंदा मरा है क्या? कहाँ? वो चलो किधर चले गए तुम? नहीं बंदा नहीं। हम रोड पे देखो ये तुम ही हो ना टावर के पास? हाँ कूद रहो, जंप पंप कर रहे हो। चलो जंप करते हुए चलो। किधर हो आप? ये ना तुम्हारे पीछे ही हो, देखो। सड़क आओ। भाई सामने जो भी बंदा आएगा ना रोएगा, बोलेगा अबे ये चार कैसे आ रहे हैं? आ जाओ। ये घर लूटते हैं, जब लूट लोगे तो यहीं पे मिलेंगे, ठीक है? अरे है बहुत कुछ है, क्रिएटिविटी होगी। ये वाला घर मेरा हो गया भाइयों। ये वेयर हाउस पे मैं हूँ। ठीक है। अबे ये तो 2 मंजिला इमारत है। ओ स्पीड टेस्ट आ रहा है मेरा, स्पीड टेस्ट। ओ सिरिंज उठा लिया। वो थोड़ेगा पूरा घर खाली डला है, बंगला था, मैंने सोचा लूट होगी। Attention, we have received updated intelligence on the whereabouts of the target, Simon हाँ बोल तो रही है। Our latest information. ओए चलो मार्क पे जो मैप में मार्क है वहाँ चलो। अच्छा चलो आ गए हम। अच्छा मैप में जो मार्क उधर आओ। आराम से चलना गाइस, टेक द पोजीशन। ये मैं हूँ। चलो टेक द पोजीशन। पेड़ का कवर लेके आगे बढ़ते रहो। हेलो आयुष भाई, क्या हाल है? हम 3 आ रहे हैं, एक और कौन का? हाँ आ रहे हैं, पता नहीं रह गया कोई तो। निंजा भाई अबे इधर उधर देखते चलना और साथ में रहो थोड़ा। अरे बंदा है, अरे बंदा खड़ा है, बंदा भाई मारो। अरे मारो बंदा है। अबे मार दिया। नहीं इसको लेना है, इसको रिक्रूट करना है पागलो। मार दिया हमको।
Bro, I am with you. मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। हम मिल गए। इसको पहुंचाना, इसको प्रिजन, हाँ इसको प्रिजन पहुंचाना, इसको प्रिजन पहुंचाना है। अबे मैं तो सस्पेक्ट लेजिकल ने मेरे को मारा। लेजिकल तुमने बम फेंका। ले चल प्रिजन की तरफ ले चलो इसको। वाह वाह वाह, बम फेंक दिया मेरे पे। चलो मार रहा हूँ उसको। लेजेंड तेरे पे हमला हो सकता है। से बम आ गया। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चलो बस मेरे साथ। तेरे को लोकेशन आ रही है, कहाँ पहुंचाना है? मारती मेरे को, कुछ भी करती है। लेजेंड तेरे को लोकेशन आ रही है क्या, कहाँ पहुंचाना है? ऐसी मन हो गया था मेरा पास जाने का उसके। नहीं नहीं कुछ भी। चुप रहो, बेफालतू मार दिया मेरे को। कुछ ला रहा तेरा? माँ का लोड़ा मार। अरे अभी तुम गाली दे रहे हो भाई। जब बाहर आओगे ना तो बता रहा, ठीक है? मार दिया उसको, मार दिया। साला खुद गाली दे रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं। चलो ठीक है, 2 किल हो गए मेरे। बस हील है किसी के पास? हील तू मर गया क्या लेजेंड? हाँ। अरे गेम हो रही है। चलो बस करें क्या भाइयों? माचो हील ही नहीं मिली है मेरे को। अबे तुम लोग गालियां निकाल रहे हो, हमको गाली निकालने से मना कर रहे हो, क्या है? अरे ये ले, 3 बार तुमने दी वो ठीक है, एक बार इसके पास हील है यार, इसके पास हील है। तुम क्या बोल रहे हो वो देखो ना, मेरे को तो पता नहीं था। इस बंदे को पहुंचाना है, देखो इस बंदे को पहुंचाना, ये मिशन है। गलती से हो गई यार, गलती से। फटाफट निकला यहाँ से ये। तुम बड़ी साइड ले रही हो नीट की। अरे यार मैं कैसे मर सकता हूँ? कैसे तू चमन जैसे मर गया यार इससे? अपनी मिशन पे कंप्लीट नहीं हो पाया यार। मिशन अच्छा बाहर लग रहा है खुद ही अपने बम से मरी हो। साइमंस भाई को गन दे देता है, एक बीटा लेते यार इसको भी थोड़ी गड़बड़ हील विल करना चाहिए। वो बंदे पे था क्या, इतना शॉटगन मारी उसको मैंने? कैसे हो बाबू भाई? अरे यार बढ़िया है राहुल। अब वापस स्टार्ट करो, वापस स्टार्ट कर लो। कर दिया। ये वाला करो, टीडीएम करो, टीडीएम करो, टीडीएम। अबे वो अच्छा टीडीएम कर रहा हूँ, देखो टीडीएम कर दिया टीडीएम कर दिया। सर्चिंग फॉर प्लेयर। भाई हाँ ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों के लिए रुकी लीग नहीं बना, पहले हम लोग को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्चिंग फॉर मैच है क्या? सर्चिंग फॉर प्लेयर्स, सर्चिंग फॉर प्लेयर, सर्चिंग फॉर गाइस। लाइक करो सबके सब, जिसने लाइक किया भाई। इतना अच्छा गेम प्ले दिखा रहा हूं मैं तुमको, रीजन भाई का तुम लाइक नहीं कर रहे। भाई का मिल गया, मैच लग गया। एक टीडीएम खेल लो फिर। हाँ फिर भाई हील भी मिल जाती ना तो लंका ही लगा देता। एक स्मोक मिला था वो तो मैंने यूज कर लिया वहां। घुसेंग क्या गाली दे रही है? अबे तुमको बोलना बंद कर दूंगा मैं, गाली देती है। हाँ भाई मत बोले जा। मेरे से एक मतलब भला इंसान बन के मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ तो गालियां सुनाती है हमको। आजकल की लड़कियां। लेजी मेरी टीम में, फ्री निंजा मेरी टीम में। लेजेंड अभी रुको, एस्केप दबा के। नहीं हो रहा यार, भाई देखो क्या चल रहा है। हाँ मैं भूल गया था, मेरे को बोलना। ये बिग्गी कौन है? अभी से बोलूंगा नहीं कुछ भी, हेल्प नहीं करनी मेरे को। हाँ नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा। ए बग्गा भाई आ जाओ। बग्गा भाई ने तो पहले तेरी बहन नेट आ गया, नेट आ गया। मारो पैस्किल को, मारो यार मैंने अपने आप को भाई अंग्रेज है सामने। यहां तक गेम का लिंक काम नहीं कर रहा है, उसको कॉपी करो और पेस्ट करो। मार दिया एक बार दम किया। ओ हमें जीतेंगे भाई। ओ बीजी की ऐसी उसके ऊपर ही बम फोड़ दिया मैंने तो। लेजेंड वाइटी के ऊपर बम फोड़ दिया। ओह क्या बात है। बैठ के डाक जाला मार दिया की आंख दिखा। ये भाई ये थोड़ा सा इसमें है कि दिखते नहीं है बंदे। दिखते हैं बिल्कुल। हमको तो मार रहा है साला, मार दिया। बिगी पीछे मार दिया हमने। ये देखो इसकी मां का मारो, इसकी बैंड की। ये प्रो बंदे आ गए सामने यार, 14 किलो गए उनके। अबे हमारे
अच्छा हम मार रहे हैं तुमको, तुम हो दूसरी टीम में लग रहा है। निंजा को मारा मेरे, निंजा भाई। साले तुमको बोला बोलो कितना आरपी नहीं करेंगे, आरपी करेंगे। मैं बग्गा, मैं पोता को उठाने वाला हूं उसके बाद। ओ पीछे बंदा है, पीछे बंदा है। इसको कैसे बोलूं, मार दिया साले ने। कौन है ये? लेजी गर्ल। क्या हुआ? लेजी गर्ल बैक स्टेप करती है, बैक स्टेप करती है। सामने से तो मार नहीं सकती उनको, बैक स्टेप करती है। अबे बैक स्टेप करती है। हिम्मत है तो सामने से मार के दिखाओ ना, फेस टू फेस। हिम्मत है तो। अरे वो किधर बताओ, किधर हो बताओ। बेस में घुस के मारेंगे तुमको, अब तुम देखो। जी बेस में घुस के मारेंगे तुम। कैसे फेंकते बग्गा भाई? आ जाओ क्यू से तेरी भैंस की टांग लो, मारा किसी को तुम्हारा खुद ही के नेट से मर गया मैं। लो भैंस की टांग बिगी को मारा आपने। अरे ऐसे कैसे हमसे नहीं मरेंगे। एक और किसी को तो मार दिया मैंने, एक और किसी को तो मार दिया भाई। अरे तोड़ देंगे, तोड़। एमो कैसे रिलोड होती है? बेस में जाके वापस ना। बचाओ। अरे मेरी टीम में जो फेफ डैड आ रहा है वो क्या खेल रहा है? साले मेरे से तो कैंप करके मारेगा, मेरे को मारेगा। बस ये पता चल जाए हील कैसे होता है। ये कौन है? लेजी गर्ल, अब बोल, अब बोल। वाली जगह अब हील कैसे होता है? हील मेरी भैंस की टांग। अरे हील कैसे होता है? वो है प्रो हम, ठीक है। हमको कैसे बोल रही है? अरे मैं हूँ लेजी। हील कैसे होता है? हील कैसे? ओए ये कौन है? लगती थी मैं की भूल गया। साम्राज्यम। इतना शोर का। ओ भैंस की टांग, ये कौन था? साला मार दिया। अच्छा तो पता ही है हमको, हमको नहीं बोल रही। हम कौन सा बोले तुमको कुछ? ये कौन है? लेजेंड कैसे बैठा चुप। लो भैंस की टांग, सारा पेल लिया है। लो एक और पेल देंगे। लो एक दीवार के आर पार, बेंचो दीवार के आर पार मर गया मैं। पेल दिया है। अरे भैंस की टांग रिक ने मार दिया है। दीवार के आर पार मार दिया किसी को। बम मारा, बम मारा भाइयों, सीधा। लो अरे कहाँ निंजा भाई? का भरोसा मैंने नहीं मारा। अच्छा कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो है तुम्हारा बंदा वो तगड़ा मार रहा है। अबे कौन है हमारा बंदा? कौन है? हम मार रहे हैं। ये कौन मार? अरे सब आपस में मर रहे हैं। इससे किसे मार दिया मेरे को? फोड़ से होता था। अच्छा कौन था भाई? लेफ्ट साइड से दो बंदे आ गए। वो एकदम से मुंह पे आके डर गया। मैंने फाड़ दिया अपने आप से। ओ भाई बंदे आ गए। एक को तो मार के मरा इस बार तो मैं। लो इसकी भैंस की टांग। साला कौन था ये? रिक साला रिक आया बड़ा। बेस में घुसेंगे। अबे पेमेंट क्या? व्हाट अबाउट बग्गा इज लाइव? ये भी तो बोलो, मेरे को भी तो बोलो। अम्मी तो तगड़ी। आ गया
बताए नूब है, इतना मार रहे हैं। देखो यार ये कुछ ज्यादा ही अबे यस यस, क्या हार हुई है, मजा आ गया जी। अबे तुम्हारी तो हार हुई है, यस क्यों बोल रहे हो? मेरी टीम में टॉप किलर ही मैं ही हूँ। मेरे को देखो इधर, तेरा तेरा मेरी टीम में टॉप बंदा ही मैं हूँ मारने वाला। आई बड़े ऊपर हूँ, एक्सक्यूज मी। कहा तुम क्या लेजी, देखो ना 8 तुम्हारे 8 मेरे। बट जीता कौन? एट द एंड जीता कौन? अरे यार भैया ये तो ओविन जैसा दिख रहा है, ये पक्का 4 भाई, से अपन पेलो लोगों ने डेढ़। आग लगा दी है। अबे देखो तो ये हमसे कैसे जीत पाएंगे अरे तुमने आग बताओ। लगा दी। मजा आ गया जी। मैंने भी आग लगा दी। आई बड़ी वापस आ जाओ। एक और खेलना है, क्या करना है? एक और खेलते हैं टीडीएम पर। एक और लास्ट टीडीएम खेल। आओ लगाओ। महेशपति साम्राज्य। Once more, बंदी। मजा आ रहा है हमको, मजा आ रहा है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। हो गया स्टार्ट। उम्मीदों के सूरज निंजा सॉरी लेजेंड भाई, मैंने सुना था आप कुर्सी से गिर गए अभी थोड़ी देर पहले। सही है बात? ओ ये तो जीत रही है मेरी टीम। डिप से क्या होता है? अच्छा तो के ये सगर Confirm। निकले चारों को गले। हाँ भाई, कौन है हमारी टीम में? कौन है? जब मैं सेशन में बैठा था ना, तब मैंने पुशअप मारी। पुशअप मारी है। पहले पुश बोले तो कुछ और ही लग रहा। कौन से मार दिया इसने मेरे को? पुशअप। अबे यार मैं तो तुम्हारी टीम में ही नहीं हूँ, बताओ। क्या गलत है ये यार। स्ट्रे शॉट है भाई, स्ट्रे शॉट है, तुमने देखा नहीं होगा ऐसा कि बता भयंकर गेम भाई ठीक है। रुक जा। साले मैं कहा, मेरे को कहाँ से मार रहा हूँ मैं? कुछ भी रामजादे भाई ले बता दे उसके साथ कैसे कैसे जीतेंगे हमसे, है बताए। दो डाउन स्कीम क्या मारा इसने? माहिस्मती बैठे अच्छा 1v2। अरे इधर भी देखो, इधर भी देखो। अरे भैंस की टांग कौन मार दिया? ठोकर मार दिया। चलिए अपने बंदे क्या मारा यार? यहाँ पे ऑल चैट करके गाली दे सकते हैं? ऑल चैट करके गाली दे सकते हैं यहाँ पे? मेरी टीम में फ्रेम क्यों ड्रॉप होने लगा? ये कौन? ऑल चैट करके गालियां मरेंगे। बाप रे क्या मारा हूँ भाई। वो निंजा भाई के साथ। अरे अटक गया। भैया आपसे कल पूछा कि ये गेम कैसा लगा? मस्त लगा जी। चौथ मार रहा है। कल पूछो, परसों पूछो, तरसों पूछो, फ्राइडे तक पूछ लो मुझसे पहले तो। चल कौन था ये साला? चलो 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 जोकर ही मारे जा रहा है। ऊपर ऊपर है बंदा। इस बार तो मेरा मुश्किल लग रहा है। क्या रोक भैंस की टांग। मजा तेरे अलावा बोल रहा है? बार बोल रहा है ये बोल पूछा किसी ने? पूछा तेरे को किसी ने? चल नहीं रहा क्या अभी तक? चल रहा है, मैं तो खेल रहा हूँ। अरे भैंस की टांग मार दी। निकलेगा 3 2 1। मैं इसी खेल रहा हूँ, ये 22 पॉइंट्स है। 24 हो गए। मैं पता है 41 वाले किल वाले में हूँ।
मारो इसकी भैंस की, मारो मारो मारो। लीजन भाई कवर दो यार, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। कहाँ पे हो गया, कहाँ पे गया? अरे बाप, अरे पीछे से पड़ गया। भाई मेरे मैच में कोई नहीं है इस बार। चलो ये एक तो मार दिया हमने। भाई मेरे लेजेंड भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेजेंड भाई मैं हूँ। शॉट मारा ये वाला तो। बट तुम तो पीछे चल रहे हो ना, मैं अरे कहाँ पीछे चल रहे हैं, कौन बोला लोड ही पीछे थी। चल रहे हैं बताओ, आपके साथ है। अपोजिट टीम में, अपोजिट टीम में? सच में? मैं अपोजिट टीम में। हाँ क्या बात कर रहे हो, लेजेंड भाई हमारे साथ है। हाँ मैं और बग्गा साथ है, मैं और बग्गा। लो एक और डाउन। बॉल लो है। ये बाबू भाई कहाँ रहे हो घूम फिर के ये लोग? अरे तेरी है, पहला बात है बताओ यार। देखा बाबू भाई, देखा क्या देखा, तू तो है भी नहीं। मैं नहीं मारा, समझ गया मैंने। क्या मार रही भाई मैं मेरे से जल्दी मारो भाई, मैं बहुत प्रो बन गया हूँ भाई। मैं इतना अच्छा लगा मेरे को गेम भाई। ओ ये डॉक्टर मैम का चल रहा था, डॉक्टर मैम का है, आ जाए इजी। उनको और काम भी है ब्रो, ये तो साइड बिजनेस है उनका। डीसिंग हो गया भाई। अरे भैंस की टांग कौन मार रहा है, पीछे से मार दिया। उनके अड्डे में जाके मार कर जीतने वाले वैसे हम तो। गाइस डाउनलोड दिस गेम ऑन पिन कमेंट गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीसी होगा अपने फ्यूचर ये सेम सेम कॉपी। विक्ट्री, हम तो जीत गए भाई। मार दिया था एक को, तो ले गया मैं, एक को तो ले गया। अरे कौन मार रहा है भाई, कौन मार रहा है? अरे इस बार मैंने 4 ही किल किए, मैंने तो बहुत मारा था भाई। भाई भाई अपने मेरी टीम में तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं, सब दुश्मन ही थे मेरे। चलो खुद अब बैस की दिखाए थे गेम प्ले, चलो 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 लो डाउन 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 डाउन। तो इस हिसाब से आप उनके चैनल में क्या कर रही हो? मैं तो जॉब कर रहा लो हूँ। ये भी डाउन। तुम्हारा गेम चल रहा है क्या? हाँ अरे भैंस की टांग, होने वाला बस होने वाला है। एक वो खेलते रूकी वापस से। अरे हम ही जीतेंगे, हम ही एक रूकी जीतेंगे। जीतना है यार। यार कितना डैमेज दिया उसको। भाई काफी बंदों के एम काफी अच्छे हैं यार। अरे भैंस की टांग नेड आया है। निंजा एक लास्ट रूकी खेलेंगे फिर बंद करेंगे। हाँ सब लोग आ जाए एक बार तब। भैंस की टांग पीछे से आके मारती है। कैंपर चल तेरी। ओ अबे घेर माइक के मारा को इस क्या बार हुआ? तो यार, घेर के मारा इस बार तो। सब लोग जब आ जाना बाहर तो बताना। तुम चलेगी क्या बाहर? क्यों? ल ल ल आओ टीम डेथ में स्टार्ट करना है, दोनों दूसरे मैच करो। में थी? क्या बात कर रही हो? आगे बाहर आके टीम हमको डेथ तो में ये स्टार्ट कर पता रहे ही हो। नहीं था, बताओ इतनी देर का। रुको आ रहा हूँ। एक रूकी अरे आ रहा हूँ बाहर। इन सबको बाहर आने दो, लेजेंड को बाहर आने दो, लेजेंड को बाहर आने दो। क्विट कर दिया। आओ बाहर जाओ, एक साथ स्टार्ट करें। भाई विनर्स, वी आर विनर्स। तैयार हो जब एक साथ स्टार्ट करना। हेलो 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 कमा के ले लो। मजाक कर रही है। अरे रुक जाओ, अभी आ रहे हैं भैया आपके साथ खेलना है तो एक साथ स्टार्ट कर दो ब्रो, जब हम स्टार्ट करें। कब करना है बताओ? खेलने वाला हूं मैं। कब करना है बताओ? दोबारा कब है उस पे? जब लेजेंड को आने दो, टीच पे आने दो। गोलू तू आया? जब आ जाए 3 2 1 स्टार्ट। रुक जाओ। अरे क्या दबा दे, चूतिए सब। अब दबा दिया हमने। वाह वैसे अभी टाइम नहीं हुआ है, देर नहीं हुई, जल्दी आओ। वाह चलो अब नहीं होगा, नहीं चलेगा, रुकी गया, सर्वर बंद हो गया। रुकी के तो सर्वर ही बंद हो गए। तेरी भैंस की टीडीएम लगा लो, टीडीएम और लगा लो। रश हो रहा है भाई, पूरा रश हो रहा है। एक हमको 1 मिनट, अबे 1 मिनट हमारा मैच लग गया, क्विट करने दो फिर मेरे को। 1 मिनट दो। अरे तो उन्होंने बोला दबाओ, उसी में आ रहा, उसी मैच में आ रहे हैं। नहीं टीडीएम। रुको मैं एग्जिट कर दूं। कोई दबा दो। आ गया तेरे मैच में, आ गए हम भी तेरे मैच में आ गए। आप लोग दबाना बहुत जल्दी है, ठीक है, थोड़ा रुक के दबा लो यार। हिलाना भी है। नहीं भैया, बार मौका थोड़ी मिलता है, बताओ। बताओ बार देंगे तो मैं तो खुद मैच में आ गया। अबे लेकिन मल्लू आई है मेरी चैट में, तो सॉरी इसमें चैट में नहीं, इसमें। लेकिन तुम मेरे मैच में नहीं हो ना तुम लोग। तुम्हारे मैच में ये जोकर है, मेरे मैच में लेजी, तुम्हारे मैच में। अरे मेरे को तो दिख ही नहीं रहे। मेरा सर्चिंग फॉर प्लेयर्स है। मेरे को नहीं दिख रहे हो यार। हमें लग गई लॉबी हमारी शायद। मेरा सर्चिंग फॉर मैच है। मैं तेरा हुआ या हुआ ही ना। निंजा हम और आपका ही लगा। क्या सीन है, गोलू पब्लिक कहाँ है? अबे क्विट करो यार, नहीं लगाया, बताओ। StrayShot and download it।
अरे मत करो, एक एक खेलते हैं। आवाज अटक रही है क्या? देन चलते हैं। नम 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 नम। अबे स्नाइपर ले लिया हमने तो। इसा ठीक है, उतरते उतरते मारो, यहीं बैठूंगा आपकी बार, यहीं कैंप करके मारूंगा। बीजीएमआई खेलो यार, मजा है। ये बीजीएमआई से भी अच्छा है भाई। आवाज अटक रहा है, सच में आवाज अटक रहा है। नहीं अटक रहा, मैं देख लेता हूँ। एक गेम खेलना है टीडीएम। तो कह रहा है नहीं अटक रहा। देख अबे बेस में है, बेस में आ गए हैं बंदे। बेबी को बेस पसंद है। अच्छा उधर चले गए क्या? सफल हो गया लगता है बेस। किसका? बाबू भाई का बेस छोटा सा। मेरा बेस तेरा दिल। क्या? कुछ भी भाई बना रहा था, बना नहीं। भाई जब आवाज ठीक है तो बताओ, जब तो गेम में है वॉइस प्रॉब्लम। अब बताओ ना, अब अच्छी है। अरे यार इसको घंटू मरो कैसे थी? लेफ्ट जाओ, चुपचाप लेफ्ट आओ और यहाँ से भाग भाग लेजेंड भाग। अभी बताओ गाइस, ठीक है? अच्छा है, वॉइस अच्छा है मेरा? चेक चेक मस्त मस्त। अपने अपने पीसी का पता होता है। बस सब है। स्ट्रीम डिले है क्या? स्ट्रीम डिले नहीं है ब्रो। भाई इस बार तो अपन हार रहे हैं। मैं तो टाई हो रहा हूँ, अरे हम नहीं है आपकी मैच में यार। बताओ, गलत फहमी हो रही है आप लोग को। बोल रहे हैं मैच में 2-3 बंदे मेरे एरिया में आके मेरे को मार दिए। अपने ही बंदों को मार रहा हूँ मैं तो। आजा भाई आजा। किस काम की ये स्नाइपर है? ब्रो क्या स्नाइपर बहुत अच्छी है। अबे मेरे पागल, तुम कान फाड़ दिए मेरे, कान फाड़ दिए तुमने। आराम से सीखो, कान फटनी जरूरी है। जीत रहा हूँ फिर भी मैं तो। ब्रो मैं जीत रहा हूँ भाई, मैं जीत रहा हूँ। अच्छा खेल रहा हूँ भाई मैं। भाई गुड नाइट भाई, मिट्टू भाई। तरा तरा कहाँ पे है बंदे जरा बताओ। तरा तरा बंदे किधर है जरा। कितने अरमान शादी तेरी वास्ते सुसाइड कर लिया जी, कर लिया। एक भाई बहुत मस्त गेम है भाई। एक बार खेलोगे बार बार खेलोगे भाई। एक बार खेलोगे बार बार खेलोगे। भाई रॉकी में क्या है भाई? भाई मस्त एकदम। किल्स बताती है वो कौन होता है। अरे बैट को मारता हूँ तो बहुत बुरा मारता हूँ मैं। अब की बार तो किल किए भाई यार। नहीं भैया, सॉरी, हमारे तो कभी नहीं हुए 15 आज तक। डिफीट हार गया था। जीत उसी की होती है, जनता जिसको चाहती है। भाई 9 किल भाई। एक और है जो 30 किल कर दिए उसने मेरी टीम में। तेरी पैसी। अरे हार गया। पर मरा मैं 5 बार ही हूँ भाई। ये कहाँ से आ गया भाई? मैं भी 5 बारी मरी।
बच्चे बंद करते हैं अब। ला ला बंद ला कर ला दे। ला 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 ला। हाँ बंद कर दे। हो गया गाइस, हो गया। चलो भाइयों, अरे तो फिर भाई इसी के साथ ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। यहीं तक था गाइस गेम हमारा। अभी तो इसके सर्वर हो गए खत्म, पर ऑफिशियली लॉन्च के बाद इसको मैं प्रॉपर तरीके से खेलेंगे। आरपी कब करोगे बस इसके बाद गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस स्ट्री शॉट वालों को, जिन्होंने हमें ये बीटा वर्जन खेलने के लिए प्रोवाइड करवाया, ठीक है। और TOH क्रिएटिव्स का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास लेके आए, दोनों को बिग शाउट आउट टू यू। आरपी अभी जा रहे हैं, मिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीम गाइज। आई होप गेम आपको पसंद आया होगा। और हम आपसे मिलेंगे अगले गेम में। तब तक के लिए स्ट्रे शॉट को भी बिग शाउट आउट टू यू और TOH क्रिएटिव्स को भी बहुत शाउट आउट टू यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीम। दिस इज निंजालियो, दिस इज गुप्ता जी इन द चैट। क्या बात कर रहे हो? वापस आ रहे हैं गाइज हम थोड़ी देर में, डोंट वरी। तब तक के लिए दिस इज अच्छा। इंग मैन क्या हाल है निजा भाई? अच्छा गुप्ता जी वेलकम टू द स्ट्रीम। एक और खेल के जाता हूँ यार, चल ही रहा है सर्वर तो, दिल में न रह जाए मेरे। आप भूल ना जाना उस दिन टिप्स का। क्या इसका निंजा भैया, कल क्या प्लान है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का? देखते हैं ब्रो, मैच के हिसाब से खेलेंगे। ऐसा ना हो पिछली बार जैसे फटाफट ही खत्म हो गया, तो कल अगर मैच इंटेंस हुआ तो स्ट्रीम की छुट्टी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जगह देखी है मैंने छुपने की। अरे इसको टिका तो दिया था मैंने। गुप्ता जी क्या जाए भाई, आपने तो फेमस कर दिया हमें। अरे गुप्ता भाई, यू आर वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ RSL, should be famous. वन बी टू एक स्प्रे में बाकी आग एक बम में फट गया मैं तो। साले मेरे से तो स्प्रे बैटल करेगा। गाड़ मार दी। यही कैम कर को, यही कैम कर। नाइस। अरे हमारे पॉइंट्स कम क्यों है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
वो मर गए क्या एक ही से? अरे घर खत्म हो गया। तेरी बहन को मुंह पे नेट डाल दिया इसने तो। बोलो ना आज तो इंग्लिश बोली है भाई, मैंने भी क्या ही इंग्लिश बोली थी भाई। लेट नाइट कब तक बताओ, बस ये लास्ट है, बस हो गया मेरा तो। हार गया यार, मैंने मारा यार, इस बार भी बहुत मारा मैंने, 9 मार दिए। इधर सब प्रो प्लेयर थे। आई 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 अकेले क्या करोगे आरपी पे? रख लो वही बुला। चल रही है गाइस आरपी, सब जा रहे हैं, सब आ रहे हैं आरपी, डोंट वरी गाइस। चलो तो फिर गाइस, थैंक यू वेरी मच। यहीं तक था इस गेम का। थैंक यू वेरी मच। बिग शाउट आउट टू यू StrayShot को, जिन्होंने हमें बीटा वर्जन खेलने दिया, और बिग शाउट आउट टू यू TOH क्रिएटिव्स, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। दोनों को वेरी वेरी बिग शाउट आउट टू यू। अभी मैं चलता हूँ, आपसे थोड़ी देर में वापस मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज NinjaLio साइनिंग आउट। मिलता हूँ मैं आपसे आरपी पे। बाय बाय। लाइक कर दो जिसने मेक श्योर लाइक नहीं किया अभी तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। दिस इज NinjaLio साइनिंग आउट।